Tap God is going to kick things off, gets the first frag. Oh, again. But this time, Lol Nob will definitely follow him up, and he will also gonna help him. Now, I believe they have got the take. Oh, okay. Radiant tried his best, but in front of Spectre, you cannot take down someone with the classic. Though he tried the burst shot, but could not create it. Kaiser's aim seems very precise and accurate. The moment he is spotting the enemies, he's penetrating the bullets into their heads, and he's not missing all the shots. 1 versus 3 situation. Let's see. Omen is the last one standing. Golden streak. Their team is counting on him, but I don't think so. It's gonna be very easy for him to clutch it out. Let's see, Miss, what's gonna happen here. And just as you said, did come to pass eventually, but I just have to draw your attention towards Kaiser at the moment because his ultimate is already online. It did come online in the previous round itself, and I mean, 6 kills in just 2 rounds. That's absolutely mind-blowing gameplay. And of course, that's the first ultimate ability online coming up on the board. And it's really going to be interesting. I would be really psyched to see if Kaiser would pop his ultimate in this round. And judging from their positioning, I think they are still going to go for their A bomb side execution, which seems to be working out so far for Team JV. And of course, Desert is just creeping up on A long and taking a look at Raiden here. He was holding garden angle, and Skiller on the other hand, I think the sound has been given, but not sure if that Sova actually heard him there. And of course, I think, oh my goodness, this is a very good lurk. And of course, there we are, that ultimate ability comes online. The door does go down, but there's also trades coming in as it's a 3 versus 4 situation now. Kaiser yet again coming in and bagging another kill for his team, making it into a 3 versus 3 situation. He has another player coming towards him. Swooper, will he be taken down? Yes, he will be. Kaiser, that's another triple kill for him. Oh my goodness, 3 rounds each with a triple kill for Kaiser. Just absolutely mind-blowing. And with that being said, it is 3-0 on the scoreboard. Yeah, the way they are playing, that is really appreciable. The way they were entering the side, especially the Chet and Kaiser, they are really dominating so far. But we couldn't say anything because just a 0-3, and we might see a comeback from the defender teams. But this round might be possible again going in favor of attackers, though they have harmed the economy of their opponents, and definitely they'll be going for a light by this round. Let's see, can we see a thrifty win? Because if we are going to see a thrifty win, definitely next round we could see a comeback from the defending team. Rightly said. And this time around, there is a little bit of change in the strats, and JV are now stacking up on middle, clearing up, and I think that they could just push market at this point. The Sova is holding that angle, but he will be blinded by Reina's eye, and Kaiser will take him down too. This time around, it's going to be a bomb side B assault, and it has been all but cleared as Kaiser again. It's just luck or just pure skill from him, and there goes Team Elements. Absolutely annihilated towards the end, and of course, this time around it was a little bit different as Kaiser only got 2 kills in the previous round. But still not too less, but considering he's been getting triple kills in the previous 3 rounds too, that's And really I good. believe, Miss, you do remember that we also have seen matches in the past where we have seen the dominance in the beginning of the game, that Mm-hmm, zero mm-hmm. five, 0-6, and another team is coming up and they're rising after losing matches in the rows. Let's see, can we see that same scenario again, or attacking team is going to dominate here? एंड लेट्स सी यहाँ पे क्या होता है अगर ये इस तरीके का डोमिनेंस इन्होंने अटैक में बरकरार रखा मिस और कहीं 7 से 8 राउंड इन्होंने निकाल लिए तो मुझे लगता है यहाँ पे डिफेंडिंग टीम के लिए मुश्किलें काफी होने वाली हैं Rightly said, and there we see Reina getting ready with her assault towards a bomb site. Raiden deploying that counter. Um, and of course he has been spotted out by Lolno, but he will be taken down. And with that being said, Reina, that's Elements as Reina will be taken down by Kaiser yet again. And now Kaiser is alone in a 1 versus 3 situation. I believe Miss defending team was waiting for my green signal. The way I motivated them, they are bringing the comeback here. Of
course, and that is indeed the first round picked up by Team Elements. Kaiser, there was a little bit of his shoulder that was spotted by Sova from Team Elements, whose name I literally have no. Wait, If I I'm not wrong, wait, it's wait. Zozo. No, it's Kakarot. Is that Kakarot? I don't know it's Z or K. I'm also confused. I think he does mean to write Kakarot from Dragon Ball, but I think that is what he means. Oh my But that goodness. font is really not predictable. I'm really unaware. Yeah, you have seen that anime, right? Somewhere in your childhood, you must have. No. Oh my goodness. Oh, of all animes, just watch Dragon Ball once you find the time. It's really good. Coming back to the game at hand, though, we see there is another bomb site A rush coming Oh, in, and oh my, lol, nope is going to slap Raiden and just rush inside bomb site right now. And of course, Golden Streak will kick things off and Spike will down take A. Kaiser down. And I just as know I say that, it exactly is a where 3 you versus 3 are. and situation. now And now we could see miss that defenders are able to stop the fast execution in the round, because in the beginning of the round we have seen that they were coming to the sides, and they were the way Spike they were taking planted. side. Now this is not happening. They're also fighting back, and it's a 3 versus 3 situation in this game. Let's see यहाँ पे defender और attackers के बीच में काफी कांटेक्ट सकता है टीम मैनेजमेंट। Last और यहाँ player पे आप देख standing. सकते हैं सोवा जरूर डाउन करेंगे यहाँ पे, सुपर यहाँ पे टीजर को डाउन करने में सफल हो चुका है। फिर से इस गेम में आप देख सकते हैं 3 वर्सेस 1 oh, सिचुएशन। यहाँ पे लॉल लॉब को काफी डैमेज मिल सकता है डेफिनेटली। यहाँ पे oh, इंटरनेशनल, बट थ्रू द डार्क स्मोक ही कुड डाउन जोजो रोमैन। द स्ट्रीक विल टेक हिम डाउन, एंड एक और राउंड आता हुआ यहाँ पे डिफेंडिंग टीम के खाते में, और यहाँ पे स्पाइक को भी आसानी से डिफ्यूज कर दिया जाएगा। और कहीं ना कहीं जिस चीज की बात मैं और मिस कर रहे थे कि एक तरफा मैच हमें देखने को ना मिले, यहाँ पे एक अच्छा कमबैक दिखता हुआ टीम एलिमेंटल्स का। you're absolutely right there. And that being said, that's the second round picked up by Team Elements. And I have to say, though, I was half expecting JV to actually back this round because their executions have been flawless, but this time around, I think they slacked a little bit on defending the side from a retake. And with that being said, Kakarot, I see him. Let's just call him Sova at this moment because I think he is the only Sova in the game so far. And with that being said, yeah, this seems that JV are kind of split in between deciding on bomb sites, but I do see the There. bomb going towards bomb site A. Kaiser did take a little bit of damage, and of course, Lol Nope is right inside courtyard. And does he actually? Yeah, I think he did spot that's over there, and that's a pretty Oh, niche angle held by Skiller. But of course, Skiller kept the cross angle over there, but he was too slow. He couldn't penetrate the bullet over there. But Sova back to back, oh, bringing the two cracks for his team. Again, it's a 4v2 situation. Now defenders have adopted the game and game style of attacking team, but still will somehow manage to take down Radiant in the A side. 3 versus 2 situation, but still is again down in the health. And here comes the ult of Omen. But that was a fake one. indeed, and I don't really think how that ult would play out, but it seems that the rotation is kind of working out at the moment. I do see the Cypher is about to spot, Last and player oh standing. no, it's all 30 about that seconds left. timing. Skiller will be taken down, but luckily, Faust is the one who has the spike on him at the moment. He is alone in a 1 versus 3 situation, just 20 seconds left on the board, and there we are. I do think that now the location has been revealed. That was the alarm bot destroyed, and it seems that he's just going to walk through the swarm 10 grenade. seconds 10 left. seconds left on the board, and the spike is going down. The rush is coming in, and oh, that's the grenade, but it'll do a lot of damage, and one tap guard will finally take Faust down. And that's another round picked up by Team Elements. But before dying, he did his job. He at least initiated, planned the spike, and he could, at least got the 300 credits for his team. So, and because being alone, 1 versus 3 situation with the Spectre, it was really not easy for him to clutch it out. But somehow he managed to plant the spike, and he could collect 300 credits for his team. Indeed, and those credits do actually go a long way, and it could be that, life or death situations where if you had just that one particular ability, or rather the money to buy that particular ability, that could have saved the round for your team. And Absolutely just as right. I Absolutely. say that, I think it's going to be another mid to B going this time around as well. But Faust, on the other hand, is moving through B Hall, and
Not sure what he's playing at right now. And with that being said, Kaiser and his team are also moving up on middle, just gaining control of mid right now. And with that being said, there are still two of team elements present somewhere near middle right now. Faust is also deploying his Omen smokes, but yeah, there it goes. It's going to block CT, Believe but this, they're planning from market area to be. They're trying to get the hold of B side. Let's say, yeah, two people has entered. You can see Cypher and Reina. Oh my God, they will take him down, and Skiller will manage to down the Sova. oh, oh my, oh goodness, lol, no. Oh, that's very sad what happened to him, and of course, beautiful stuff set up by Killjoy. That was super, and I mean, just it was those abilities that killed Lol Nope at the moment. First the alarm bot, and then the swarm grenade, and then the turret came in and finished the job. And with that being said, there comes that ultimate from one tap god, and does it actually? No, it doesn't quite destroy the lockdown, nor does it do a lot of damage. But of course, with that being said, the flashbang goes out of Omen, and it's still 2 versus 2 situation. Faust almost manages to take one tap guard down, and there we are. One Oh my tap guard will God, take the last 2 what kills for that God? himself. He is doing just thing to his name, man. Rightly said, and of course, it's 4 to 4 is now the score. Elements have picked up 4 rounds in a row, and that's good Valorant right there. Yes, absolutely right. In the beginning of the game, we saw 0-4, then 4-4. So, what an amazing gameplay coming up from Team Elementals, and we wanted to witness such kind of match where we want to see a neck-to-neck competition between such teams. Let's see Indeed. what plan is coming up from the attacker side because so far defenders has adopted their game style. They are ready to deny all sort of attacks, and now they made the attackers helpless for another economy round. But here comes the Stonebread. Lol Nop is going towards the A side. Let's see, can he get some frags for his team? Can he penetrate the base to into the heads of defenders? स्पॉट यहाँ पे कर चुके हैं उनको अंदाजा यहाँ पे हो चुका है बट रेडियन यहाँ पे टेक डाउन जरूर करेंगे बट यहाँ पे टेजर आप देख सकते हैं फ्रैग जरूर लिया बट यहाँ पे अकेले बचे हैं और यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि आसान इतना ज्यादा होने वाला है बचने की कोशिश बट रेडियन विल टेक हिम डाउन और एक और राउंड यहाँ पे आता हुआ हमारी डिफेंडिंग टीम के खाते में बहुत शानदार गेम प्ले यहाँ पे टीम एलिमेंटल्स का जिस तरीके से कम किया है 0-4 के बाद यहाँ पे 5-4 का स्कोर आप देख सकते हैं एक राउंड की बढ़त बना ली है मिस यहाँ पे तो क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? It's actually good gunplay by Element Esports at this moment, and of course, well, just that side hold that they are now doing. I think they have read uh, JV as a book, as an open book, and they're just able to counter any of the movements they are doing. And this time around as well, they are going towards bomb side B, and oh, one tap got on that operator, doesn't quite manage to land that shot. And with that being said, this does open up the possibility for, oh goodness, and I think this is okay. I haven't honestly seen. I think Kaiser picking up any frags in quite some time. And with that being said, though, he is moving up towards EV. He does spot one top guard, but But not one before he tap takes him bot was down. ready. And indeed, he was ready. It's still again a 3 versus 3 situation between both the teams. There goes that Omen smoke, perfectly blocks the market angle, but Lolnop was waiting inside that very same smoke. Manages to take Golden Streak down, and with that being said, Raiden knows exactly where Faust was and manages to take him down too. But the trade comes in. Desert will pick up the trade, and one tap Oh, guard tries to go for a clutch, he but dropped doesn't the quite get it. operator. He was trying to pick up the Vandal, but the moment he picked up the Vandal, there was two enemies in front of him. And definitely, they will take him down. Another round comes in favor of attackers. Now 5-5 is score. Very nice game coming up from both the team. Let's see what's gonna happen in the next round. Rightly said. 5-5 is now the score, and I do hope that um JV have successfully managed to break this momentum of Team Element Esports at this moment because it's going to be very interesting, and that's a good
jumped updraft, Jet did, and I think it's a bit of an off angle where she is holding right now. Of course, the nano swarm grenade goes out. Just as a precaution, though, just so that no Oh one my was God, holding that what was angle. But that? Rayton, he was looking at that angle, hoping that someone would walk into that crosshair, and yet again manages to take Desert down too. But Faust finally gets the trade, and there goes that precautionary grenade from one tap corner. And of Spike course, down A. those were very fast frags for Element Esports right there, and Skiller and Lolnop are the only two people left alive going up in a Last 2 player versus 4 standing. situation. Check, make that a 1 versus 4 situation. Lolnop alone with that operator. And of course, doesn't quite manage to land the shot. It's a pistol versus pistol. But one tap god is going to whip out his Vandal just at the last moment, Last and round that's in the another half. round in the bag for Element Esports. 6-5 is the score, and this is the final round before the sides change. एंड मुझे लगता है मिस यहाँ पे कि ये राउंड भी डिफेंडर्स को जरूर निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपको अगर यहाँ पे कम बैक करना है, मैच को अपने फेवर में रखना है, डोमिनेशन क्रिएट करनी है, तो कम से कम यहाँ पे 2 राउंड की बढ़त एज अ डिफेंडर आपको एसेंट में रखना ही पड़ेगा अपने फेवर में. Rightly said, and I think that everyone does have enough money because this is the final round. There's really no sense waiting around for your ultimates. And with that being said, it seems that another market to B strat is coming up, or rather, maybe this time around they're going from mid to A. That owl drone from Kakarot does go out. It does manage to spot JFE Faust, and okay, he has been spotted out. Just doesn't quite manage to land those shots, but Skiller, on the other hand, will get the final info of everyone else on the team. And with that being said, Lolnop will take down one tap guard, and of course, Skiller does go down. And wow! One enemy remaining. With that being said, that's the Spike last. Excuse me. This is the last person left standing. That is Swooper. Has the lockdown ready, and oh, that's a good shot by Lolnop too. Picked up a 4K towards the final round of first half, and with that being Switching said, it's sides. 6 to But 6 is now the I score. Really believe going neck to neck. he was about to, initiate the lockdown, but he didn't go for that. Though it was the last round, he could have given Mm-hmm. a try to that. कि लास्ट राउंड था वहां पे यूज कर लेना चाहिए था, बट आई गेस उन्होंने यूज नहीं किया. उनको लगा शायद कि अगर मैं इनिशिएट करूंगा दे विल गेट टू नो माय पोजीशन एंड दे विल डेफिनेटली गोना रश एंड दे विल Mm-hmm. डिस्ट्रॉय मी, रादर गोइंग फॉर दैट ऑल ही गॉन फॉर द गन फाइट, बट अनफॉर्चुनेटली ही गॉट किल्ड. और ये एक और राउंड आप देख सकते हैं. फर्स्ट हाफ अभी तक बराबरी पे गया. यहाँ पे अटैकर्स के खाते में 6 राउंड, डिफेंडर्स के खाते में यहाँ पे 6 राउंड जा चुके हैं. देखते हैं मिस यहाँ पे क्या उम्मीद है, आपको क्या लगता है, आपको कि कौन सी टीम यहाँ पे कुछ डोमिनेट कर सकती है. Oh, it's really difficult to say at this moment because both the teams have been playing phenomenally well. And I mean, just as you said, after first half, it is tied. So it's just like we're starting the game anew. This time around, though, there won't be any side switches. So the first team that reaches 13 will be the one that wins, obviously. And with that being said, though, it seems that the attacking team right now, that's Element, are now moving towards bomb side A. A little bit of damage does come towards Raiden's way, and I don't think that's anything major. Yeah, no, nothing major, but Killer But is holding somehow inside. Kaiser went out of the dark cover and he got the intel for his team. उनको अंदाजा तो जरूर हो चुका है कि यहाँ पे मिड से ए कंट्रोल लेने की कोशिश जरूर की है. आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लेयर्स हेवन की तरफ पुश करते हुए नजर आ रहे हैं. साइड कंट्रोल यहाँ पे ऑलमोस्ट मिल चुका है. रेडन यहाँ पे आप देख सकते हैं अंदर पहुंच चुके हैं. डेफिनेटली किसी पर यहाँ पे स्पाइक प्लान किया जाएगा. वन प्लेयर को यहाँ पे Oh, डाउन कर दिया oh, जा चुका है. काइजर को यहाँ पे वन टैप देख सकते हैं. बहुत शानदार यहाँ पे हेडशॉट दिया अपनी गोस्ट तरफ से थ्रू द स्मोक. यहाँ पे जब तक क्रॉसर लेके जाते हैं टेजर वहां पे टेक डाउन करेंगे. व्हाइट की आप देख सकते हैं यहाँ पे आज मैंने यहाँ पे डाउन कर दिया. वन टैप oh, डाउन कर oh, दिया. टेजर इज ऑन okay, फायर. okay. फ्रैग. क्या शानदार राउंड निकाला मिस यहाँ पे हमारी डिफेंडिंग टीम ने. Rightly said, and those are really crisp headshots coming from that ghost pistol, and of course, kudos to I think Swoon or rather Tezer for getting the final triple kill in the last round, and of course that did win them the pistol round, so that means they now have enough money to go for a buy, and defenders on the other hand are going to go for an eco. And with that being said, they are gearing up towards a bomb site B assault, but look at Tezer's setup on bomb site B. They are in for a surprise at the moment. Elements, and let's actually see if they would actually fall for it.
And Faust is holding a really close angle, and I think he does hear a lot of those footsteps come through. Yeah, he definitely does, but will that be enough though? The all room does go out, it does manage to spot Desert, but the rush doesn't quite come just yet. They were waiting for Raiden's thing, and oh goodness, there we are. Spike That down setup, B. it did Last do its player job standing. perfectly. Desert got a kill with the swarm grenade, but I guess it was bound to happen. It was an eco round for elements, and with that being said, 8 to 6 is now the score in the favor of JV. जी हाँ, बहुत अच्छा राउंड आता हुआ है हमारी टीम जेबी के लिए और फिलहाल यहाँ पे 2 राउंड की बढ़त बना ली है और डेफिनेटली पहला राउंड जीतने के बाद आपके पास अच्छे चांसेस भी होते हैं और कहीं न कहीं उस मूवमेंट का पूरी तरीके से फ़ायदा उठाते हुए, उस अपॉर्च्युनिटी को कैपिटलाइज़ करते हुए फिलहाल यहाँ पे टीम एलिमेंट को कुछ करके दिखाना पड़ेगा क्योंकि आप यहाँ पे 2 राउंड दे चुके हो, आपके पास एक अच्छा मौका है जहाँ पे आपको स्पेक्टर वर्सेस वेंडर और फैंटम से फाइट करने का मौका मिलेगा, आपके पास फुल शील्ड्स होंगी। लेट्स सी यहाँ पे किस साइड की तरफ झुकाव होता है, यहाँ पे फिलहाल मैं देख रहा हूँ बी साइड पे एक फास्ट एग्जीक्यूशन बट यहाँ पे जो सेंटिनल्स का चुनाव है हमारी डिफेंडिंग टीम का काफ़ी शानदार, साइफर भी है जो अकेले यहाँ पे ए साइड को संभाल सकते हैं, किलजॉय को यहाँ पे दिया गया बी साइड संभालने की ज़िम्मेदारी। Oh, फिलहाल इस बारी मैं देख रहा हूँ साइड पूरी ओपन दे दी जा चुकी है, ऑलमोस्ट यहाँ पे एंट्री हो चुका है, मुझे लगता है इस बारी रोका नहीं जा पाएगा मिस इनको, स्पाइक डेफिनिटली प्लांट होने वाला है, लेट्स सी क्या यहाँ पे एक रीटेक देखने को मिलेगा या फिर टीम अटैकर यहाँ पे करेंगी डोमिनेशन, व्हाट वुड यू से मिस? let's actually wait and watch because the spike has indeed gone down and every single person is playing on the bomb site. That's not a good place to be in. There we are. The first of the frags are coming in. The trades are coming. Lolno almost manages to take down the enemy Reina too. And oh, that's really not how I saw this go down. I thought that JV would at least bag a couple of more of those kills, but it seems the What was round is that? still not What was that? over. And there goes the lockdown, but I'm not sure that Tazir has enough time nor the HP to pull it out just yet. And no, just let's say that Raiden will take Tazir down. And with that being said, that's the ultimate ability of Tazir downed as well. So 7 to 8 is now the score. Good round by Element Esports. It was And a this buy round for this them. round And was yeah. quite indeed and quite important for our team attackers because they had the buy in this round और कहीं न कहीं मुझे लगता है ये राउंड अगर वो हार जाते तो मुश्किलों का सामना उनको करना पड़ सकता था क्योंकि यहाँ पे हमारी जो टीम एलिमेंट है काफ़ी अच्छी पोजीशन बना चुकी है, काफ़ी अच्छा कमबैक करके दिखाया उन्होंने, जिस तरह से रोज़ में राउंड निकाले अपनी टीम के लिए। बट लेट्स सी फिलहाल काफ़ी कांटे की टक्कर 15 राउंड्स हो चुके हैं जिसमें 7 और 8 आप देख सकते हैं स्कोर फिलहाल 1 राउंड की यहाँ पे बढ़त ज़रूर बना चुकी है हमारी टीम जेवी। लेट्स सी क्या इस राउंड में डिफेंड कर पाएंगे। फिलहाल हम देख पा रहे हैं ए साइड की तरफ एक फास्ट एग्जीक्यूशन थोड़ा-सा मैं देख रहा हूँ एलिमेंट्स यहाँ पे गेम प्ले का जो स्टाइल है वो दोनों टीम का अलग है। टीम एलिमेंट मुझे काफ़ी अग्रेसिव नज़र आ रही है ड्यूरिंग अटैक और यहाँ पे ए साइड की तरफ आप देख सकते हैं प्लेयर घुसते हुए नज़र आ रहे हैं। फिलहाल एंट्री ऑलमोस्ट हो चुकी है बट यहाँ पे Oh. Spike पैरानॉइड down का A. इस्तेमाल और यहाँ पे डाउन कर दिया जा चुका है। कहीं न कहीं प्लेयर्स यहाँ पे आप देख सकते हैं रोटेशन करते हुए नज़र आएँगे यहाँ पे। ओह माय गॉड! बहुत शानदार शॉट यहाँ पे इस किलर का, रेडियंट को स्पॉट किया, Enemy सीधे remaining. हेडशॉट और यहाँ पे काइदर आएँगे, स्ट्रीक को डाउन करेंगे। मुझे लगता है ये जो फास्ट एग्जीक्यूशन था, इसका जवाब डिफेंडिंग टीम बहुत शानदार तरीके से दे रही है और जिस तरीके से आप यहाँ पे फास्ट एंट्री लेना चाहेंगे, इतना आसान नहीं होने वाला है बस यहाँ पे। Yep, very rightly said, and I can just only wait and see what's going to happen in the upcoming rounds. पर मुझे मिस एक चीज़ की कमी लगी कि वहाँ पे जब साइट में एंट्री ले ली जा चुकी थी, तो वो डोर बंद क्यों नहीं किया गया? रेना वहाँ पे खड़ी थी, आराम से उनके पास समय था, वो डोर को बंद कर सकते थे। एटलीस्ट उनको ए शॉट से जो ओमेन को वहाँ पे डाउन किया गया, दैट वुड हैव नॉट बीन हैपन इन द लास्ट राउंड, बट दैट वाज़ मिसिंग। आई डोंट नो दे गेट इनसाइड, बट दे वर जस्ट होल्डिंग द एंगल रादर गोइंग फॉर द डोर क्लोज़। I think that was one of those careless mistakes that may have just happened. You know, something that skipped the mind, but whatever be the case, uh, it seems that they are moving towards bomb site B right now, and Lolo is going to start things off, and oh my, that's a lot of damage that Raiden took, and of course, that's a flawless victory by Team JP. Absolutely annihilated that rush of Team Elements.
मुझे लगता है एलिमेंट को यहाँ पे कुछ ना कुछ फिगर आउट करना पड़ेगा, क्योंकि आप नॉर्मल कॉम्पिटिटिव गेम की तरह इसको नहीं खेल सकते जब आपको पता है कि यहाँ पे इस तरीके की टीम खेल रही है जिन्होंने आपका गेम प्ले अडॉप्ट कर लिया है। और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, यहाँ पे कोई भी रोटेशन अभी तक मिस हमें नजर नहीं आई है। अगर यहाँ पे टीम एलिमेंट जाती है ए साइड की साइड, तो वो सीधे ए पे एंट्री करते हैं, वहां से कोई हमें रोटेशन नहीं दिखाई पड़ता। कोई लर्क भी फिलहाल We अभी crash मैंने against our देखने wall. देखा नहीं है यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं उस चीज की, उस स्ट्रैटेजी की मुझे कमी खल रही है। और यहाँ पे आपको पता है कि डिफेंडर ओरिएंटेड गेम है, डिफेंडर ओरिएंटेड मैप है, तो यहाँ पे अगर किसी भी साइड पे हम सीधे एंट्री लेना चाहेंगे तो डिफेंडर्स आपको वहां पे गिराने वाले हैं। Rightly said, and that is indeed what happened in the previous round. The beautiful setups the Killjoy had for Team JV. Of course, it did pay out in the end. And with that being said, elements are now moving in towards bomb site A, or rather bomb site B. Apologies, going from market to B. At the moment, they did bag a couple of kills, so that should open up the bomb site for them just a little bit. But they are still not done, as Lolnov does take a lot of damage. But it's now a 2 versus 2 situation. Both the duelists are really low on HP, and of course, both killjoys are still alive. Now, the spot has come in with the turret. Super will take it down, but I don't think it will be of much use because the information has been given. Lolnop does hear those footsteps come through, and oh goodness, he does take him down beautifully. And now it's Another a trade one from versus one situation between Desert and the opponent killjoy. That is Swooper. Killjoy versus Killjoy situation, but and both are 30 good in seconds health। left. और यहाँ पे स्पाइक जल्दी से, ओ माय गॉड, स्पाइक यहाँ पे डाउन है। स्पाइक उनको वहां Oh, पिक करना, और कहीं ना कहीं सामने किलजॉय वेट जरूर कर रहे होंगे। इंटेल उनके पास जरूर है। वन वर्सेस वन सिचुएशन देखना पड़ेगा, क्या स्पाइक क्या मिल जाएगा। जी हाँ, स्पाइक जरूर मिल जाएगा। 17 सेकंड, यहाँ पे 77 सर सेकेंड। oh, ओ माय गॉड। और मुझे लगता है Desert. मुझे यहाँ पे लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन दिखता हुआ अंदाजा वहां पे हो चुका था। लॉल को काफी डाउन किया था वहां पे वन टैप में, तो कहीं ना कहीं उनको अंदाजा था कि वो डैश लेके वहां पे हेवन के साइड, गार्डन के साइड होल्ड करे। तो कहीं ना कहीं वहां पे बैक का एंगल लेके जाना मेरे हिसाब से एक छोटी सी गलती थी वन टैप की, दो ही ऑलरेडी सी द प्लेयर In की, वहां पे प्लेयर ऑलरेडी थे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लग रहा है माइंड गेम में कमजोर पड़ रही है टीम एलिमेंटल। Indeed, and of course, well, how can we discount the fact that Swoop, I think he did forget to take the spike. Really, I for one thought that he took the spike with him. Really, but when he reached the bomb site, it was then we realized that he didn't actually take the bomb site with him. And there goes the ultimate, and wait, using a raise ult to shoot a turret and not even actually getting that turret. And the Sova ult does go through, but oh, that's a good angle held by Lolno, but it will not be enough. Skiller will take Super down yet again, but that is the spike dropped as Engage well. triggered. And now the Skiller's ultimate ability comes through as well, and he's just looking at it, and of course, beautifully spots Sova. And I think he also does know the location of the Golden Streak. Of course, he did see his weapon there. And of course, great round, and of course, match point in the favor of Team JV. मैच पॉइंट आ चुका मिस्टर। मुझे लगता है यहाँ पे स्ट्रैटेजी की कमी की वजह से यहाँ पे जो अटैकर्स है राउंड नहीं निकाल पा रहे, कहीं ना कहीं फंस गए हैं। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं मुझे लग रहा। आई बिलीव मेंटली दे आर होपलेस। सो जब उनके कोई भी प्लेयर डाउन हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं वहाँ पे आप देख सकते हैं बैक टू बैक जो है प्लेयर्स को वहाँ पे टेक डाउन किया जा रहा है। टीम जे भी समझ चुकी है कि यहाँ पे हमें आराम से खेलना है, होल्ड करके खेलना है, लेट देम कम इनसाइड, हम आराम से उनको डाउन करेंगे और राउंड निकालते जाएंगे। और कहीं ना कहीं डू और डाई सिचुएशन यहाँ पे आ चुकी है हमारी टीम एलिमेंटल्स के लिए। Of course, every single round, including this one, is going to um, be a do or die situation for Team Elements right now. And of course, JV have been absolutely nailing it for the previous rounds with the defense that they have put up over on bomb side B. And of course, now there goes the first grenade. Does it actually do damage to uh, Golden Streak? Not sure if it did, but Desert, on the other hand, he was looking at it, but wow, what a shot by one tap god. Raiden, on the other hand, is going to take Faust down too, but Skiller gets the trade. And of course, Kaiser finds the trade as well, and there goes that ultimate ability. Raiden has his ultimate on him, and one tap go. Oh, what a shot by Kaiser! Takes Raiden down, and that is the final flag coming in from LOL Noob. And of course, great game, well played by everyone, and well, it did close out with a 5-point lead. So yeah, that was a good game indeed.
इंडीड इट वाज अ गुड गेम, बट कहीं ना कहीं मुझे थोड़ी सी कमी लगी टीम एलिमेंटल के कोऑर्डिनेशन पे, और वहां पे मुझे लग रहा था कि इन कंटेक्स्ट ऑफ गन पावर की अगर मैं बात करूं तो दोनों टीम काफी ओवर पावर्ड थी यहाँ पे, बट कहीं ना कहीं जो स्ट्रैटेजी की अगर बात करें वो टीम जेबी का काफी शानदार, स्ट्रैटेजी उनकी काफी अच्छी, टीम कोऑर्डिनेशन काफी अच्छा है, क्योंकि अटैक के वक्त मैंने कई बार देखा कि टीम एलिमेंटल्स के प्लेयर्स दे वर गोइंग वन बाय वन, वहां पे एक साथ आप अपनी एबिलिटीज का इस्तेमाल करते हैं, वो कहीं ना कहीं मुझे मिसिंग दिख रहा था, तो शायद वो मुझे हो सकता है माइट बी दे फॉर्म ऑफ दिस न्यू टीम, एंड इन कमिंग फ्यूचर इनका ये जो कोऑर्डिनेशन वाला प्रॉब्लम है डेफिनेटली वो उसको सही करेंगे और इम्प्रूव करेंगे, और डेफिनेटली अपकमिंग टूर्नामेंट्स में बहुत अच्छा प्रदर्शन करके दिखाएंगे। फिलहाल ये गेम हमारा जा चुका है टीम जेबी के खाते में, बहुत शानदार गेम प्ले देखने को मिला, एंड आई बिलीव हमारी जनता हमारे साथ बनी रहेगी, क्योंकि बहुत जल्दी स्टार्ट किया जाएगा हमारा नेक्स्ट गेम। टिल देन गाइस, स्टे ट्यून विद अस एंड प्लीज कीप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।
Right there. Right there. शॉट देखो अब रफ मत यहाँ छोड़ दो यहाँ छोड़ दो Right there. Right there. Right there. शॉट देखो अब रफ मत यहाँ छोड़ दो यहाँ छोड़ दो Right there. Flash out. स्पाइक डाउन जल्दी कर ले Spike down A. Spikes here. ब्रिज पे गन है क्या? हाँ यहाँ पे Spikes here. Blinding. बंदे आगे बंदे आगे Your duty is not over. Flash out. अल्टी कर दो Out of charges. अल्ट मार Think. Spike down A. Get out of my way. तोड़ दो 30 seconds left. ये मत जाओ मत One enemy remaining. ये शॉट से पुश कर Last player standing. Enemy down. Remove. Yo. One enemy remaining. Your duty is not over. Yo. 30 seconds left. I got the spike. 10 seconds left. Planted. Reloading. Wall raised. I am. Yo. मुझे मार दे उसको तो अरे भाई और किस काम में यहाँ पे ये बता वो ट्रिप्स लगा रहे हैं हम दोनों से तुम्हें तो पिंग करना Have nowhere to hide. आप वेट कर लेते Reload. अब एंड्स में
ठीक है क्या वो आ जाना है बोलो आ जाना है Flash out! One enemy remaining. आराम से प्लान करो, मिड बेंच आएगा। Light planted. तेज रेना को हो सके Joke's over! You're dead! नाइफ करूंगा, चुप रहो, चुप रहो। नाइफ होगा वो, नाइफ होगा। Yo.
Good evening, ladies and gentlemen. Hope you're very excited to witness the Silverstone Presents East Valorant League, and this first game is between X Factors and NW Bro. I'm your buddy Godex and your cast analyst for the day, and with me I have my co-cast and co-analyst Miss. Hello, Miss. Welcome, buddy. How are you? Hi, Godex. Thank you for the intro. And I mean, I am very interested to see this match between X Factors going up against NW Bros. And just as we can see, they are right now picking their agents. X Factors are on the defense side, and NW Bros are attacking. And Ascent is the map. It's very interesting map. Any thoughts about this particular one, Godex? Uh, According to me, I would not predict anything because so far we could see that agent selection only one agent has been logged in the side of defender, and though in attacker side they have almost selected their teams, one player only. Moreover, he is remaining, so I believe the Choose your selection. agent. Let's see. Only 9 seconds are remaining. So if we are talking about the defenders, not Sai isn't thought of picking Rana, but not locked yet. But I will. He will definitely gonna lock. Okay, so Miss, what would you say about the agent selection of both the teams? I would say it's pretty much balanced. They have rather going from defense to attack, they have two duelists. Two are information gatherers and one controller. That's interesting. And over on the attacking side, I only see two duelists and two controllers and only one information gatherer. So what I'm thinking right now is that the defense side, that is X Factors, they're just going to deploy the Cypher and Sova on different bomb sites. That's usually Mhm. how what would be the sensible play. And with that being said, I do like Ascent as a map. Mid control is one of the very important things that you have to take care of in this map. And if you really have that mid control, you can transition between bomb sites very easily. Yeah, but I don't think so that but when you have Cypher in the defense, it's not gonna be easy, and especially Omen is one of the best controller for this map. Even being on different side, you can help out your teams, and you can use the dark covers to give cover to the defenders. Let's see यहाँ पे attackers के लिए क्या होता है, because अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे कहीं ना कहीं attacking team के पास मिस यहाँ पे एक flashing agent is missing, but they have Rage and Jet. They are very fast duelists, and they are very good agents to get inside the site. Hmm. Rightly said. And just as we say that, the first two recon arrows do go out. And I don't think they have really spotted anyone just yet. So far, it seems to me that a B play is coming. Rather Fury from X Factors is going to take down two members. So it's a 4 versus 3 situation. And oh my goodness, Wild is going absolutely wild. And almost manages to take down AYHD from the attacking side. But Fury is going to back the third kill. And with that being said, defenders pick up the first round. That is X Factors, and they do have a lot of money in the bank. Let's see, I think they are going for a bit of a buy at this situation. I see Styx is going for his shotgun. That's a decent shotgun, and they're playing on A side, so I think not the worst choice of weapons they could have. Wild, on the other hand, has a Spectre on their hands, and taking a look at the attacking side. Not a lot of money in the bag for them, so I think they're just going to buy those utilities. That is what they're doing. And of course, it seems that there is another bomb site B play coming this time again. Or rather, not really though, because NW Pros, they are moving on middle through a catwalk towards a bomb site, and over on top of mid that... Wow, What was not that, Sai. man? He was in a good position, caught them off guard, and it's a 3 versus 2 situation, still favoring Last player X Factors standing. right now, and Check make that a 1 versus 3 situation. Just that last remaining Jet on NW Bros' side, and And I believe Vile knows that she is there, and definitely Vile will push and will try to finish up. But Six comes and steals the skill, and here goes another round in favor of defenders. Very well, momentum in coming up in the beginning of the first match of the day. Defender seems strong, but let's see in the third round what is going to happen. Indeed, and the defending team X Factors, they did also pick up 2 rounds in a row, so that's a lot of money in the bag for them, and seems that they're still holding on to guns from the previous round. Be strong. And over on the attacking side, I think that, yeah, they do have enough money for a full buy at this point. I see Vandals, I see Phantoms.
So, and also a change in bomb sites this time around as well. So right now they are preparing for their A bomb site execution. The first smoke has been deployed. I don't know which Omen did that. And with that being said, a recon did spot, not Sai, so it was only natural that that Reyna would be taken down. And of course, Ace getting lucky with the bullet going through the box and finding sticks. And over on another side, really, Wild and Fury kind of even the odds. Vicky is going to deploy a shock dart. I think that didn't quite go as he had planned. Morvier, on the other hand, will be taken down by Wild. That was a good flashbang by Fury. And of course, he also bags a triple kill and finally gets the defuse too. And of course, that was a great round indeed. A good comeback from X Factors. And yeah, I think that something did go wrong in NW Bros' execution on A bomb site. जी हाँ, बिल्कुल सही फरमाया और अभी तक डिफेंडर्स ने बहुत शानदार प्रदर्शन करके दिखाया जैसे कि 2 शुरुआती राउंड निकाले पिस्टल और ये जो बाय राउंड था, इसमें भी सारे अटैक्स को विफल करते हुए नज़र आ रहे हैं और बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे तीसरा राउंड भी अपने नाम किया है। और जिस तरीके का मैं अभी देख रहा हूँ यहाँ पे इक्वेशन आप देख सकते हैं 3-0 का हो चुका और यहाँ पे कुछ ना कुछ और यहाँ पे इस बारी मैं देख रहा हूँ एक फोर्स बाय के लिए जाते हुए हमारे अटैकर्स लेट्स सी यहाँ पे स्टोन बेड का इस्तेमाल किया जा रहा है क्रिस को ज़रा देखना पड़ेगा यहाँ पे ऑपरेटर लगाया हुआ थे स्टोन बेड का अच्छा इस्तेमाल बट कुड नॉट कनेक्ट और यहाँ पे आप देख सकते हैं मोटिवेटर ने डाउन जरूर किया बट यहाँ पे उनको भी ट्रेड ऑफ कर दिया चुका है एस यहाँ पे विक्की को डाउन करने में सफल हो सके यहाँ पे एक और ऑपरेटर का शॉट ए YHD का बहुत शानदार शॉक डार्ट जाता है और यहाँ पे 6 को आप देख सकते हैं पिक ऑफ कर लिया जा चुका है 2 वर्सेस 3 की सिचुएशन हो चुकी है और यहाँ पे बी साइड का कंट्रोल आ चुका है हमारे अटैकर्स के हाथ में Rightly said, and also these are the two very same people that got the round in the bag, the previous round in the bag, and of course now comes the Killjoy ultimate. Now they don't really have a lot of time. Killjoy has been down, so that renders all of her abilities useless, except of course for the lockdown ultimate. And of course I think that they should be able to clear out this site, but that's not a lot of time in their hands. AYHD is going to take Wild down. Fury is the last person left alive. And yeah, now he is definitely running out of time, maybe finding that final exit track. Not quite though. Can't really do anything about it, even though he did pick up the operator at the end. Still, he was trying to good pick round. up the operator, but I don't think so why he was doing that because he was not that he is going to die over there because his spike was about to burst. Indeed, and that was a brilliant use of the Killjoy ultimate as well. The lockdown, and of course she did die, but at the end of the day, lockdown did give her her team enough time to not let the spike be diffused. Yeah, agreed. And the reason was using of that lockdown was just to buy the time, and she did her job, and she secured this round in the favor of in her team. And यहाँ पे जो विनिंग स्ट्रीक थे आप देख सकते थे 3-0 की उसको यहाँ पे विराम दिया जा चुका है 3-1 का यहाँ पे स्कोर होता हुआ मिस पर मुझे लगता है यहाँ पे एक कमबैक जो अगर यहाँ पे 1-2 राउंड और निकालता और यहाँ पे फर्स्ट ब्लड आप देख सकते हैं कृष्णा निकालेंगे फ्यूरी को यहाँ पे डाउन किया है मिड कंट्रोल लेने की कोशिश मिड की तरफ से आप देख सकते हैं यहाँ पे एंट्री लेने की कोशिश हो चुकी है 3 से 4 एजेंट यहाँ पे मिड की तरफ से पुश करते हुए नजर आ रहे हैं प्रजा के साइड में फिलहाल भी मुझे कोई भी डिफेंडर नजर नहीं आ रहा है तो यहाँ पे इतना आसान नहीं होगा हमारी डिफेंडिंग टीम के लिए बट यहाँ पे ए शॉट की तरफ भी मैं देख रहा हूँ यहाँ पे मोमेंटम शिफ्ट हो चुका है और यहाँ पे गलत डिसीजन मिस आई गेस वो जो मार्केट का चॉइस था दैट वाज बेटर और ये जो रास्ता चेंज किया हमारी अटैकर्स की टीम ने कहीं ना कहीं वो उनको भारी पड़ता हुआ Oh my goodness, Sticks and not Sai, both of them did really just demolish that push. And yes, there was a man disadvantage for X Factors earlier on in the round. But I mean, what these guys did that hold, not Sai, I think that was just good game sense from them. And I mean, just getting those 2 kills right through the cloudburst, that's an achievement in its own. And of course, the judge was being properly executed at the shortest range where it's the most devastating. And wow, what a round indeed for attacking team. And of course, Styx is now going to use their ultimate. And Ace, on the other hand, is going to pick up that ultimate charge, getting one step closer. And oh my, what a shot by Wild. Right on, I'm sorry, what a shot by Chris, right on Wild's face. And oh Another my goodness, one. takes down another one. And almost takes down Motsai as well. That was a good use of dismiss there. But
actually see what is going to happen with Sticks. Is going to take Ace and Christian Dill down. And there goes the defuse, and again just that retake X Factors put up, just absolutely mind blowing, not missing any of those shots, and perfect use of their utility. But we must appreciate those scripts and sharp sheriff shot of Krish back to back 2 frags she took for her team and being a duelist she did her job. उन्होंने अपना काम वहाँ पे बखूबी निभाया शेरिफ के साथ 2 बंदे तेजी से डाउन किए बट कहीं ना कहीं उनको मौका नहीं मिला अगर वहाँ पे एक वेपन अपग्रेड उनको मिल सकता था दैट वुड हैव बीन बेटर इन देयर फेवर बट समहाउ अच्छी टक्कर थी बट राउंड यहाँ पे हमारी डिफेंडिंग टीम के खाते में जाते हुए और यहाँ पे 4 राउंड की बढ़त हो चुकी है यहाँ पे राउंड बंच में जीतने पड़ेंगे हमारी अटैकिंग टीम को अदरवाइज थोड़ी सी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा मिस्टर Absolutely right. And there goes the starting of the recons, and oh my, first blood already drawn by Ace. Sticks goes down, Notsai goes down as well, and there goes the Hunter Fury by AYHD. Was really closed. I'm not sure he actually tagged Spike down B. the other Sova, but it's still a 2 versus 2 situation, and it seems the spike has been dropped, but not yet fully recovered. And Krish, yeah, he is going to pick up the spike, and they certainly do have enough time to go for a wrap around towards bomb site A. AYHD's almost 2 seconds left on his recon dart to come in, and that can absolutely be used to scout a bomb site well in advance if he can land the recon dart. And right now, और मेरे हिसाब से यहाँ पे 2 वर्सेस 2 की सिचुएशन जरूर है बट अटैकर्स के लिए यहाँ पे एक एडवांटेज जरूर आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफेंडर्स के जो 2 एजेंट है दोनों को यहाँ पे दोनों साइड एक एक अलोन होल्ड करना है तो कहीं ना कहीं पे मैन एडवांटेज जिस भी साइड पे आप जाएंगे वहां पे जरूर होगा और यहाँ पे अगर एक प्लेयर कवर देता है एक प्लेयर प्लांट करता है तो उसके बाद यहाँ पे एंटर ली जा रही है वाइल्ड नोज दैट AYHD इज कमिंग फ्रॉम द ट्री साइड एंड जेट कम्स विद द डैश यहाँ पे स्पॉट कर लिया जाएगा वाइल्ड विल टेक डाउन फिश और मुझे लगता है ये जो राउंड चेंजिंग मोमेंट हो सकता है बहुत शानदार सेटअप बहुत पेशेंस के साथ खेल रही है हमारी डिफेंडिंग टीम कोई भी जल्दबाजी यहाँ पे नहीं और कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रेशर आता है वो AYHD के ऊपर मिस Rightly said, and that was a perfect use of the Cypher cam right there. He was looking at AYHD for so long, yet he did not click left click and mark his location. And just as he saw that Jet destroying that camera, and I mean, he immediately tagged Christian Dill, and it does give what 3 or 4 pings after finally going out, or rather, unless it's not removed. That's the Cypher cam, and of course, he was able to track him through the smoke. I and believe he took him down. Miss, he was waiting for the right moment, and that was, very patient and calm game. Yes, He was yes. just waiting that let them enter in the side. I will show them what I'm doing here. Indeed, and that cloudburst from Christian Dill could not save his life, as he was tagged by the Cypher camera. And Correct. It was a brilliant game sense by Wild there, and the score just increases to 6-1. And of course, Christian Dill, that's the second time in his half he is using his ultimate right now, and that is really good of him. I mean, he has certainly been getting enough kills, so his ultimate is charging at the same pace. And of course, Morvier will be taken down by Northside. That's something I'm not sure I was expecting. And Fury, on the other hand, will take Atomic down. And of course, again, Northside, how is he that lucky? That's the second and the third kill for Just himself. come from the heaven and he crouched because he was knowing that someone is playing behind the generator and he was ready with the headshot. Oh my, that's so lucky and yet so cool what Northside did. 7-1 is now the score, and I'm not trying to jinx anything just yet, but it is looking a little bit one-sided right now towards X Factor's favor. Yeah, very true. And now attackers in definitely will be under pressure. They have to do something. They have to figure out that what is missing here because they are getting the frags, but even after getting the frags, they're not able to secure the round. So they have to take care. इनको यहाँ पे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा. मिस राउंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे 8 हो चुके हैं. जो बचे 4 राउंड है उसमें कम से कम 3 राउंड्स उनको सिक्योर करने ही पड़ेंगे. Then they have a good chance to come back in the defenders or in the second half. Rightly said. And so far right now they are all holding outside bomb site B, and there comes the rush. I guess it was a little premature. That should not have happened, and it was, I guess, a little bit too aggressive what X Factors did in this round. And of course, now they have lost the man advantage, but
Not Sai is still not down for the count, and just as I say that Ace will take him down, but Fury is going to take AYSG down on Bomb's side. Last player standing. But right now, Oh, Wild will be this taken down as time, well, and now this it time is Trish was lucky and he, Spike knocked planted. down the Wild over. Here comes the situation, 1 versus 2 situation. Fury has to clutch it. Let's see. Ace though is in Enemy a very low health and he got the first frag. Oh my god. Chris has been shut down by Fury 1 versus 1 situation, but Ace is very low. He should know. Oh my My goodness! God, I believe Ace had to show a patience game here, but he couldn't do that. यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना था, बहुत लो एचपी में थे और यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्यूरी ने बैक टू बैक जिस तरीके का यहाँ पे क्लच करके दिखाया, बहुत शानदार राउंड निकाल के दिया और कहीं ना कहीं ये राउंड मुझे लग रहा था मिस्ट की अटैकर्स के फेवर में जाना चाहिए था. Absolutely, and I mean, I have to tell you this because it does happen quite a lot of times. If you see a turret and an enemy at the same time, and I mean, whatever you see first, that's what you're going to shoot. But Fury did not do that. He took his time, reset his aim back to the jet, and just headshot them right there. Chris Trindle went down, and of course, he still did not go for a reload. Had 9 bullets and knew that Ace was low. So, and I guess Ace did overpeak just a little bit. Could have played the time game as well, but I digress. And now let's move on to the last round before the first half. And of course, not Sai. It backs a triple kill. Is he actually going for an ace? And I mean, they still haven't used their ultimate ability just yet. And not Sai on the other hand. Of course, Vicky will be taken down by Ace, and Fury takes AYSG down, and Ace as well. That's a lot of frags coming in from the defender's side. And of course, the rounds lead, it just keeps on increasing. 9-1 is now the score. Wow. या टू मच प्रेशर फॉर द अटैकर्स. यहाँ पे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा मिस अटैकर्स को, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 राउंड में से आपके पास सिर्फ यहाँ पे एक राउंड आया है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे दुविधा में जरूर डाल दिया, समस्या उनके लिए जरूर खड़ी कर दिया चुकी, और कहीं ना कहीं उनको यहाँ पे लग रहा है कि गलतियां जो उनसे हुई है वो छोटी छोटी गलतियों की वजह से वहाँ पे जो राउंड उनके हाथ से गए, दे डेफिनेटली थिंकिंग अबाउट दैट, बट वॉट एवर हैज डन सो फॉर दैट कैन नॉट बी अंडो. यहाँ पे कुछ ना कुछ करके दिखाना पड़ेगा. जो बचे यहाँ पे 2 राउंड है, एनी हाउ दे हैव टू विन दिस, अदरवाइज दे वुड बी डेफिनेटली इन ट्रबल इन द सेकंड हाफ. Rightly said. And of course, the owl drone goes out. That's AYHT's, and he actually marks the Cypher camera instead of Cypher. So that's interesting. Not Sai, on the other hand, will take Atomic down over on middle, and there goes Lockdown. That's deployed by Ace. And I think that should give them enough movement to finally bag a bomb site. But look at that. Vicky is not about to let this go as well. He did get 1 kill, and of course he will be traded And down. why But is he what's under wild- heaven? Oh my goodness, he just doesn't want to die at this point. 10-1 is the score. It's Last round before the And switch. miss, even after lockdown, attackers could not secure this round, so they are thinking कि भाई करे तो क्या करें. They seems very helpless over here. Team XF is denying all sort of attacks over here. They're ready for all sort of tactics. indeed. And of course, 10-1 is now the score, and this is the last round before the first half. And the attacking team, they do have a lot of their ultimate abilities online. And it seems that this is a now or never time. You really have to use those ultimates. They are game-changing abilities, and just to say that, Morvier is going to do just that. A lot of ultimate abilities have been used, and there goes the first frag for the attacking team. And of course, oh my, there goes Wild with his ultimate ability as well. But it seems that they don't really need it right now, because they really just take one loss and wipe out the entire attacking team. Absolutely right. And the way the well coordinated, gun power of defenders team कहीं ना कहीं यहाँ पे मजबूर कर दिया जा चुका है मिस, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है यहाँ पे जो मेंटल प्रेशर है जो वो कैप्चर कर लिया जा चुका हमारी टीम डिफेंडर्स के द्वारा. कहीं ना कहीं जिस तरीके का टीम वर्क दिखाई दे रहा है, एक भी आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्रैग निकलता है, बैक स्टेप आता है, स्मोक आता है, क्लाउड बस्ट का इस्तेमाल होता है, और किसी तरीके से यहाँ पे अटैकर्स को बिल्कुल भी संभलने और सोचने का मौका नहीं दिया जा रहा है. टीम एक्सएफ बहुत शानदार फॉर्म में खेलते हुए पूरी तरीके से यहाँ पे परेशान कर दिया जा चुका हमारे एनडब्ल्यू बोर्स की टीम को. Rightly said, and this time now the sides have switched, so maybe we'll finally get to see the same aggression that uh,
X Factors were deploying, that NW Bros might do it right now, because I see Styx is going for a shorty. That's an interesting buy for the first round, and of course they will use that dash and clear out the nanite grenade, so that's not a lot of use being put by that. But Styx is going to get atomic, and right now the site is being cleared. But Ace and Morgan will take both of them down. Fury will be taken down as well, and it's all down to Wild, and there he goes down along with his team. That's a good hold that was put up by NW Bros. First round in the bag after the first half. It could very well spell comeback for them if they are able to keep this pressure on X Factors. Yeah, well said. It's a very good start in the second half, but the margin is too huge. 11-2. There are still, advantage of 9 rounds in favor of Team XF, so it's not gonna be easy for them to come back. But let's see. We can't say anything. Impossible is nothing. It's just a world when we are seeing such match or such games. यहाँ पे देखना पड़ेगा कमबैक किसी भी मोमेंट पे हो सकता है, बट यहाँ पे बंच ऑफ राउंड जीतने पड़ेंगे मिस, और कहीं ना कहीं ये इम्पॉसिबल नहीं है. लेट्स सी क्या टीम एक्सएफ यहाँ पे कुछ राउंड्स निकालेंगी और यहाँ पे इस मैच को अपने राउंड करती है, या फिर टीम एनडब्ल्यू ब्रोज यहाँ पे दिखाने वाला है एक अच्छा कमबैक और हमारे दर्शकों को देखने वाला है एक टफ फाइट फ्रॉम टीम एनडब्ल्यू ब्रोज. See the coordination, man. They use the owl drone and North side just chased and he thought the moment they are going to destroy, I will get the first pick. और यहाँ पे फोर्स बाय के लिए गए हैं. कहीं ना कहीं ये राउंड निकालना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, और यहाँ पे 3 वर्सेस 1 की सिचुएशन. लास्ट फ्रैग आप देख सकते हैं एस निकालेंगे और कहीं ना कहीं एक और अच्छा राउंड आता है. और कहीं ना कहीं ये फोर्स बाय का राउंड था, मुझे लगता नहीं वहाँ पे शायद वेपन अपग्रेड किया गया था, माफ करिएगा. फ्रैग जरूर निकाला वहां पे नॉर्थ साइड ने, बट कहीं ना कहीं उसको आगे कंटिन्यू नहीं कर पाई टीम, और यहाँ पे एक और राउंड आता हुआ. बट ये राउंड अब मुझे लगता है कि कांटे की टक्कर होने वाली है, और ये आ चुकी है एक परीक्षा की घड़ी हमारी डिफेंडर्स की टीम के लिए. ये राउंड अगर कुछ भी करके एनडब्ल्यू ब्रोस ने अटैक को अगर डिनाई किया, रोकने में सफल हुए, तो कहीं ना कहीं अच्छा कमबैक मैं बोलूंगा मिस यहाँ पे हो सकता है. Rightly said, and as of right now, they have dropped the spike back in CT spawn, or rather T spawn, and right now they are kind of playing the information game at this point, and really just getting all information that they can. Styx, I think, will take the trade on Atomic, and I also see Wild is holding T spawn, and the spike is just behind him, so I don't really see anything is going to come his way. But Notsai on the other hand, oh, he just manages to spot very cheekily, but not a lot of damage done to the other side. But Morvier on the other hand will take Vicky down, and it seems that Wild is going towards A bomb site, which is literally empty right now. And of course, there comes backup. Styx has arrived on bomb site A as well, and there goes the spike. Notsai is in a very good position to catch NW Bros off guard at this moment, and of course now the odds have been tipped in their favor. And let's actually see if NW Bros will clutch this out. जी हाँ, और कहीं ना कहीं आपको पता है यहाँ पे जो वेपन का डिफरेंस है स्पेक्टर वर्सेस फैंटम एंड वैंडल, कहीं ना कहीं उसका डिसएडवांटेज भी है हमारी डिफेंडिंग टीम के फेवर में. लेट्स सी हाउ दे आर गोइंग टू मैनेज 2 वर्सेस 3 सिचुएशन. स्पाइक यहाँ पे प्लांट होता हुआ आप देख सकते हैं. बीट का जो साउंड है वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ. समय आपके पास कम है, कहीं ना कहीं अंदाजा यहाँ पे जरूर हो चुका है. आगे कवर के लिए जरूर जाएंगे, यहाँ पे कुछ भी करके यहाँ पे समय बाय करना है. बट नॉट विल टेक यहाँ पे एसडीएन वाइल्ड विल टेक डाउन एस. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत शानदार तरीके से यहाँ पे जो मुझे लग रहा था अगर इस राउंड को निकालना, जैसे कि मैंने बोला था ये राउंड कुछ भी करके निकालना पड़ेगा, बट टीम एक्स फैक्टर वोंट लेट इट हैपन. उन्होंने ये होने नहीं दिया, और कहीं ना कहीं अभी भी आप देख सकते हैं मैच पॉइंट यहाँ पे हो सकता है. प्रेशर काफी क्रिएट हो चुका है टीम एनडब्ल्यू ब्रोस के लिए, और ये राउंड अगर गया टीम एक्सएफ के खाते में, तो कहीं ना कहीं पहला गेम आज हमें बहुत जल्दी खत्म होता हुआ नजर आएगा. Absolutely right, Godex. And of course, 12-3 is the score. It is match point for X Factors, and they seem to be moving towards bomb site B at this moment. And I think that just showed us what 2 information gathering agents can really do at this point. And the defense they surmounted when they were the defending side X Factors, it's just really amazing what they did. And Styx on the other hand has his ultimate, but almost manages to take Ace down, and no. The trades are coming on the other hand, but it is a 4 versus 2 situation in the favor of X Factors, and I really don't want to say this, but I think it's time to call it a game right now. एब्सोल्युटली राइट, बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 वर्सेस
वो थी सिचुएशन एंड फ्यूरी यहाँ पे लास्ट फ्रैग निकालेंगे अपनी टीम के लिए. Here comes the first match in favor of Team XF and what an amazing gameplay coming up. Utter domination shown by Team X Factor और बहुत एक तरफा गेम हमें देखने को मिला कहीं ना कहीं यहाँ पे जो एनडब्ल्यू ब्रोस की जनता होगी कहीं ना कहीं थोड़ी सी निराश आज बट कोशिश काफी अच्छी करी थी उन्होंने सेकंड हाफ में बट कहीं ना कहीं यहाँ पे टीम एक्सएफ जो बढ़त बना चुकी थी मुझे लगता है उससे ओवरकम करना रियली वाज नॉट इजी फॉर टीम एनडब्ल्यू ब्रोस. Of course, and that just shows the amount of pressure that X Factors mounted on NW Bros' shoulders really early on in the game. And I mean, they only just lost one round in the first half, I think. And after that, the lead it just kept on increasing and increasing until the first half ended. And of course, um, NW Pros, they also did manage to bag 2 rounds after the round switch, but I don't think that was really enough. But good game, regardless, from both the teams. And of course, we will be back very soon with game number 2, ladies and gentlemen, so stay tuned. काफी अच्छा लाइनअप दिख रहा है मुझे दोनों टीम्स का. सो क्या लगता है आपको वर्डिक्स की व्हाट इज गोना गो डाउन राइट नाउ? या हेवन का मैप है और हमारे पिछले 3 दिन से जो गेम चल रहे हैं जो कि आप सबको पता है कि हेवन में अटैकर्स का बोलबाला ज़्यादा होता है स्ट्रांग होता है थोड़ा सा अटैकर्स के लिए बट यहाँ पे प्लेयर जिस तरीके से मुझे डिफेंड करते हुए नजर आ रहे हैं कहीं ना कहीं पूरी तरीके से चैलेंज कर रखे रखा हुआ उन्होंने गेम में को लेट्स सी यहाँ पे फिलहाल अभी आप देख सकते हैं 14 सेकंड्स ऑलमोस्ट 10 सेकंड्स आर Select रिमेनिंग your इन द क्लॉक और agent. यहाँ पे एजेंट्स आप देख सकते हैं जो डिफेंडर टीम है उनके द्वारा यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया जा चुका है दूसरी तरफ टीम एक्सजी है जो अभी अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे
यहाँ उसकी तरफ से भी लॉक हो चुका है। तो एजे एक बारी नजर डालते हैं, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ओमेन एज अ कंट्रोलर डिफेंडर में खेलते हुए सेम कंट्रोलर यहाँ पे हमारी अटैकिंग टीम भी यूज कर रही है एज ए इनिशिएटर। यहाँ पे सोवा का इस्तेमाल किया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ। यहाँ पे अगर मैं डिफरेंस देखूंगा तो यहाँ पे जो सेंटिनल है डिफेंडिंग टीम हमारी किलजोआ पे भरोसा दिखाती है, और हमारी अटैकिंग टीम ने यहाँ पे चूज किया है साइफर को एज ए डिफेंडर, जिसका रोल यहाँ पे आपको एस निभाते हुए आएंगे अपनी टीम से। मेरे हिसाब से एज अ हेवन यहाँ पे काफी अच्छा सिलेक्शन है दोनों टीम के लिए। देखना पड़ेगा बाकी एबिलिटीज को कैसे कोऑर्डिनेट वे में यूज किया जाता है। फिलहाल यहाँ पे डिफेंडर्स आप देख सकते हैं गराज और सी साइड की तरफ यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ 2 प्लेयर्स जा चुके हैं। केजे यहाँ पे अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे किस साइड में जाएंगे, लेट्स सी यहाँ पे किधर जाना पसंद करके। और मुझे जहाँ तक लगता है गराज साइड या फिर सी साइड ही यहाँ पे सेंटिनल को खेलने के लिए बोला जाएगा। जेट यहाँ पे बी साइड होल्ड करते हुए नजर आ रहे हैं। सोवा यहाँ पे रिकॉन डार्ट से इंटेल जरूर कलेक्ट करते हुए नजर आएंगे एजे मुझे। Placing swarm grenade. बिल्कुल, I mean the lineup which I can see right now is we have a Cypher on the attacking side. और कहीं ना कहीं Cypher I would genuinely prefer Cypher in a map like Heaven because Cypher के traps can be used to hold off 2 sides and also to hold off the backstab as well. Regarding the KJ will be able to hold off one side and the other side is gonna be too hard. Here comes the first blood. Mind Rex will take down Fluffy with a clean shot and he will be able to get away, not with a good HP, but he will choose to heal right now. और यहाँ पे एक अच्छी शुरुआत हो चुकी है हमारी डिफेंडिंग टीम की तरफ से। आप यहाँ पे देख सकते हैं गॉर्बिट्स भी यहाँ पे सेकंड फ्रैग निकालते हुए अपनी टीम से नजर आएंगे। और फिलहाल यहाँ पे हमारी डिफेंडिंग टीम का तरफ से एक भी नुकसान यहाँ पे नहीं हुआ है। तो 3 वर्सेस 5 सिचुएशन यहाँ पे थोड़ी सी मुश्किलें जरूर हो सकती है। आरकेबी टीम यहाँ पे एक शॉट में मौजूद है। गॉर्बिट यहाँ पे एस को भी डाउन करते नजर आएंगे और कहीं ना कहीं यहाँ पे स्पाइक डाउन हो चुका है। आरकेबी यहाँ पे फर्स्ट फ्रैग जरूर निकालने में सफल हुआ अपनी टीम से, बट एंड्रयू यहाँ पे आएंगे। आरकेबी विल स्टार्ट डाउन फ्रॉम बाय आरक्यू एंड्रयू, और एंड्रयू यहाँ पे टर्मिनेटर को फिनिश ऑफ करेंगे बहुत तेजी के साथ। यहाँ पे बहुत कोऑर्डिनेशन के साथ यहाँ पे हमारी डिफेंडर ने पहला राउंड अपने नाम कर लिया, और कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से यहाँ पे दूसरा राउंड भी उनके खाते में जरूर जाएगा। Definitely, the last kill was pretty much very obvious because the trap which they had placed, 2 बंदे backstab से आ रहे हैं and 2 people pushing from the side, from each side, short and long. It was nearly impossible to get away from a position like that, in a situation like that. It was a really good round, I would say, for जी हाँ, WS right now. अच्छा मैन एडवांटेज वहाँ पे क्रिएट कर लिया जा चुका था। वहाँ पे मिल्स ने भी आप देख सकते हैं एक फ्रैग निकाल दिया था। गॉर्बिट्स ने भी यहाँ पे एक सेकंड फ्रैग निकाल दिया था अपनी टीम से। तो कहीं ना कहीं एडवांटेज जो क्रिएट होता है वो यहाँ पे पुशअप देख सकते हैं। और यहाँ पे बहुत शानदार हेडशॉट है। यहाँ पे गॉर्बिट्स अपने एरिस के साथ 2 फ्रैग निकालेंगे। पुशी यहाँ पे चौथा फ्रैग निकालते हुए नजर आ रहे हैं। हमारी अटैकर्स टीम यहाँ पे बहुत शानदार तरीके से एंट्री लेने की कोशिश थी, बट यहाँ पे डिफेंडर्स की टीम ने यहाँ पे पूरी तरीके से बैकफुट की धकेल दी, और कहीं ना कहीं यहाँ पे जो वेपन डिफरेंस था उसका तो फर्क पड़ा ही है। और मेरे हिसाब से ये राउंड जो है तीसरा राउंड, अब यहाँ पे एक बराबरी की टक्कर होगी। फिलहाल यहाँ पे जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ हमारी डिफेंडर टीम के हाथ में जज नजर आ रही है, एरिस भी नजर आ रही है। कुछ प्लेयर्स यहाँ पे गोस्ट पे स्टिक थे, तो वो डेफिनेटली यहाँ पे फैंटम एंड वेंडल बाई के लिए जाने वाले हैं। Alright, so we have a Jed right now with an Ares and he is ready to take that spam shot. And I think Phoenix is gonna go for that placement. But will he be able to come inside that fire? क्या लगता है? ये बट मुझे लगता है यहाँ पे 2 राउंड स्टार्टिंग में निकाले हैं। फिलहाल यहाँ पे फैंटम के साथ यहाँ पे जैसा कि देख पा रहा हूँ पुशी यहाँ पे आगे बढ़ते हुए नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं यहाँ पे अपनी टीम के लिए इंटेल भी कलेक्ट करके यहाँ पे कॉल आउट जरूर दे दिया जा चुका होगा कि ये सर यहाँ पे गॉर्बी साहब जैसा कि आपने बताया था पेरिस के तरफ स्पैम करेंगे, बट यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एंडी को डाउन किया जा चुका है। टर्मिनेटर यहाँ पे बैक से होल्ड करने के लिए वेट कर रहे थे। पुशी विल बी शट डाउन बाय टर्मिनेटर। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं जो वापसी करी है नो मर्सी, इसको डाउन करेंगे। फ्लफी यहाँ पे आप देख सकते हैं नो मर्सी को टेक डाउन कर सकते हैं, बट यहाँ पे 1 वर्सेस 3 सिचुएशन स्ट्रक्चर उठाने में सफल जरूर हुए, बट यहाँ पे थ्रू द स्मोक फ्लफी विल शट डाउन माइंड रेक्स। अनदर राउंड कंफर्ट इन फेवर ऑफ टीम अटैकर्स। और यहाँ पे 2-1 की सिचुएशन हो चुकी है। तो मुझे जैसा लगता था कि यहाँ पे एक ये जो गेम जाने वाला है काफी बराबरी का, काफी नेक टू नेक मुकाबला जाएगा। बिल्कुल, I mean if you could see actually the round which went down, फ्लफी ने काफी अच्छी एंट्रीज निकाली गेम के शुरुआत में। ऑल्दो WS की तरफ से जेट ने एक एंट्री फ्रैग निकाला था, बट he wasn't able to cope up and B side बहुत easily दे दी थी काफी ज्यादा। But this will be a bye round for both teams and we will be able to, and drone will not यहाँ पे कभी वो की नहीं साइड देख पाएंगे, but he Oh my will God, win that shot. या बट क्लासिक के साथ समाई मैंने तो टेक द फर्स्ट फ्रैग, सेकंड फ्रैग एज वेल। एस को भी डाउन कर दिया जा चुका है। फैंटम यहाँ पे उठा चुके हैं, पीछे जरूर जाएंगे 13 HP में सर्वाइव करते हुए, बट यहाँ पे आरकेबी वाज कमिंग फ्रॉम द
गराज साइड उनको यहाँ पे टेक डाउन कर दिया जा चुका है नो मर्सी के द्वारा। यहाँ पे सुसाइड आप देख सकते हैं माइंड को डाउन करते हुए नजर आएंगे। 2 वर्सेस 2 बराबर की सिचुएशन। सुसाइड यहाँ पे बट पुशी विल शट हिम डाउन। और यहाँ पे 1 वर्सेस 2 की सिचुएशन। यहाँ पे टर्मिनेटर बहुत ज्यादा लो हेल्थ में 2 एचपी है। अगर यहाँ पे गोलियों की आवाज भी छू गई तो डाउन होने वाले और नो मर्सी यहाँ पे कोई भी गलती नहीं करने वाले हैं। और एक और राउंड यहाँ पे जाता हुआ डिफेंडर्स की टीम के खाते में। बिल्कुल, I mean, even after that shot was missed by Gorbis, that ulti was missed by Gorbis, but he still managed to take 2 kills with a pistol. I mean, it was truly phenomenal. आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी फॉर्म चल रही है अभी टीम WS की, and you can see that he is in just 4 rounds he has 8 kills. Gorbis has 8 kills right now, and will we see an off this round? जी क्या और उस लगता है चीज आपको? की एज में तारीफ भी करना चाहूंगा कि जिस तरीके से उन्होंने मिस किया था बट समहाउ ही मैनेज टू पिक बैक टू बैक 2 किल्स विद द क्लासिक। और यहाँ पे फिलहाल भी मैं देख सकता हूँ मिड का ओल्ड एरिया जो है यहाँ पे अटैकर्स के द्वारा यहाँ पे स्टैक जरूर किया जा रहा है। हियर कम्स इकोनॉमी राउंड फ्रॉम टीम यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफेंडर्स की अटैकर्स की जो टीम है यहाँ पे मजबूर कर दिया जा चुका है क्योंकि इकोनॉमी उनकी डाउन है फिलहाल। गराज के बाद साउंड जरूर आ चुका है और गॉर्बिस को इसके पहले भी मैंने ओडिन से बहुत अच्छा खेलते हुए देखा। फिलहाल यहाँ पे गराज की साइड से आप देख सकते हैं एंट्री जरूर हो चुकी है उनका अंदाजा यहाँ पे हो चुका है। एक प्लेयर है टेक डाउन किया जाएगा दूसरे प्लेयर आते हैं उनको भी टेक डाउन बट टर्मिनेटर विल ट्रेड हिम आउट। बट गॉर्बिस यहाँ पे अपना काम कर चुके हैं। ओडिन मेरे हिसाब से यहाँ पे जरूर जा चुकी होगी टर्मिनेटर के हाथों में। फिलहाल यहाँ पे 2 वर्सेस 4 की सिचुएशन है और यहाँ पे टर्मिनेटर के पास जोटी ने आरकेबी यहाँ पे अपनी शेरिफ के साथ माइंड रेक्स को डाउन करते हुए नजर आ रहे हैं। 2 वर्सेस 3 सिचुएशन। लेट्स सी Last अगर यहाँ player पे standing. जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ अभी यहाँ पे वेपन अपग्रेड जैसा कि मुझे लगा था शायद टर्मिनेटर ने कर लिया होगा बट यहाँ पे स्पॉट कर लिया जा चुका है। जब तक क्रॉसर प्लेसमेंट आप हेड पे लेके जाएंगे एनड्रयू आपको डाउन कर देंगे। और यहाँ पे डिफेंडर्स के खाते में एक और राउंड आता हुआ फिलहाल 4-1 का स्कोर हो चुका है। 5 राउंड यहाँ पे हो चुके हैं जो मेरे हिसाब से 3 राउंड की यहाँ पे जो डिफेंडिंग टीम ने बढ़त बनाई है इस अटैकिंग में अभी तक काफी अच्छी परफॉर्मेंस हमारी डिफेंडर्स की टीम की। बिल्कुल, I mean, जिस तरीके से हमें प्रिपरेशन दिख रही है फॉर द टीम WS राइट नाउ, आई थिंक इट्स गोना बी रियली हार्ड फॉर टीम XG टू कम बैक इन अ सिचुएशन लाइक दिस बिकॉज उन्होंने अपने 2 बाय राउंड्स इवन इन दिस इको राउंड दे वर नॉट एबल टू मैनेज टू ड्रॉप डाउन दैट इको. They will be able to get that first blood off the mind Rex and they will try and enter the site. Phoenix will go for their ult in a very low HP. Pushy will get down Fluffy, but he will be traded off right away. Player standing. And XG Ace will take down 2 people with an amazing headshot. Now it all comes down Spike to planted. 1v4 situation. Enryu, will he try to go for that clutch or will he just try to take down as many people as he can? क्या लगता है आपको Vortex? जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ फिलहाल तो एंड्रू यहाँ पे साइड के आसपास खड़े हैं और शायद यहाँ पे 1 वर्सेस 4 इतना आसान नहीं होगा वो भी स्पेशली ए साइड पे। आपको पता है कि कितने चीके एंगल्स होते हैं उनको क्लियर करना। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साथ में उनके पास कोई भी सपोर्ट नहीं है सारे एंगल्स को यहाँ पे क्लियर करना। बट फिलहाल यहाँ पे जा जरूर रहा है यहाँ पे स्पॉट जरूर किया एस को डाउन कर चुके हैं। लेट्स सी कैन बी सी क्लच पर यहाँ पे टाइम जाता है बट टर्मिनेटर वोंट लेट इट हैपन। एंड्रयू को यहाँ पे डाउन किया जा चुका है। अटैकर्स के खाते में यहाँ पे एक राउंड आता है और मेरे हिसाब से ये राउंड एक इंपॉर्टेंट राउंड था उनके लिए। कहीं ना कहीं ये राउंड निकालना था कुछ भी करके एंड समहाउ दे मैनेज टू विन दिस राउंड। और कहीं ना कहीं एक कांटे की टक्कर है जिस चीज की बात मैं कर रहा था कि यहाँ पे एक अच्छा मैच हमें देखने को मिलेगा। फिलहाल मैच वैसा ही यहाँ पे मोड़ लेता हुआ नजर आ रहा है। टोटल 6 राउंड जिसमें से 4 डिफेंडर्स के खाते में 2 अटैकर्स के खाते में। अभी यहाँ पे प्रेडिक्ट करना है मेरे हिसाब से कुछ भी हम यहाँ पे प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। बिल्कुल, I mean the patience level we were seeing from the team XG right there after the post plant. I mean it was truly amazing. Ki even after the situation is 1v4, they're not getting too greedy to get that one kill. They were just holding off and waiting because they know that not everyone here is an underdog, and they know all of these players are really good and they cannot just give them any chance. Not even a slightest chance. I mean, Gorbis has taken off the first kill. No Mercy will take another one. Whoa. Their trade Player up all over. RKB will take down 2, but he will go down by Mind Rex. And there's the last one standing. Will he go down? Okay, he will take down the ulti by Mind Rex. But the position has been revealed, and there is one guy Nova, but he will be also taken down. Now it's a 2v1 situation, and Gorbis will take that final kill of Terminator.
securing that round डोमिनेटर ने into a अच्छी कोशिश करी 5-2. थी ये, वहाँ पे एक बंदे को डाउन करके वहाँ पे साइड क्लियर करने की कोशिश जरूर करी थी, बट कहीं ना कहीं वहाँ पे इंटर जरूर पास आउट कर चुके थे फिनिक्स की, वो वहाँ पे सीमेंट से अंदर आए हैं और कहीं ना कहीं एक किल निकाली टर्मिनेटर ने। तो ऑब्वियसली बात थी, वहाँ पे दोनों प्लेयर्स को पता था कि हिस्ट्री इन द सी साइड गॉर्विस पीछे से आते हैं, वहाँ पे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था टर्मिनेटर को। और ये राउंड जाता हुआ हमारी डिफेंडर्स के खाते में। फिलहाल यहाँ पे डिफेंडर्स थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग मुझे जरूर नजर आ रहे हैं। 3 राउंड की यहाँ पे बढ़त बना चुके हैं हमारे अटैकिंग टीम को। यहाँ पे कुछ ना कुछ बंच ऑफ राउंड जीतने पड़ेंगे, गुच्छों में राउंड जीतने पड़ेंगे, अदरवाइज वहाँ पे मुश्किलें जरूर होने वाली हैं उनके लिए। Bilkul, I mean, okay, RKB has already taken down Gorbis at mid, but they're not going in for mid. They're just rotating back to C, trying to find that one more kill. I think they already know, yeah, the Enryu has already given out his position, but he will TP out into a secure position. Plant the spike. Everybody's just clustered into C side, and they're going to go inside with a wall. Almost a double kill for Enryu, but he will take down only one and will be traded off. TP backside. I don't know if Spike down. No Mercy One enemy doing off Oh my God. great in main stage, ट्रिपल किल। taking down three. Will he be able to take the fourth one? He will make him very low, and he will be taken down by Pushy. No Mercy doing such an amazing clutch for his team right now. I think Absolutely that right, was. somehow No Mercy managed to steal this round from the attacking team, क्योंकि वहाँ पे मैन एडवांटेज जो क्रिएट कर दिया था आरकेबी ने फर्स्ट फ्लैग निकाल के गॉर्बिस ने, बट नो मर्सी ने बोला कि भाई आप गए हैं कोई बात नहीं, लेट मी प्ले हैंडल दिस। और कहीं ना कहीं यहाँ पे नो मर्सी ने जिस तरह से कॉन्फिडेंस दिखाया, वहाँ पे आप देख सकते थे एंड्रयू को भी चेक डाउन कर लिया जा चुका था। साइड में 3 बंदे थे उनके सामने, बहुत पेशेंटली वेट किया, वन बाय वन वहाँ पे क्रॉसर प्लेसमेंट सीधे थ्रू द हेड 3 प्लेयर्स को टेक डाउन किया और अपनी टीम के लिए ये राउंड करते हुए उनके नाम पे बहुत शानदार परफॉर्मेंस यहाँ पे नो मर्सी को। और मेरे हिसाब से यहाँ पे अटैकर्स की टीम के लिए मुश्किलें बढ़ती हुई एक और इकोनॉमी राउंड के लिए मजबूर कर दिया जा चुका है ये जो उनको, और ये राउंड भी डेफिनेटली डिफेंडर्स के फेवर में जा सकता है। Bilkul. I mean, if you just look into that last round, No Mercy की position was so off and he was not in a very good position because उनके box के left side भी एक बंदा था और right side में 2 बंदे थे and he was totally exposed. But still he even managed to take those little bit of jiggle peaks on both sides and managed to kill those guys first with amazing headshots. I mean, that was a truly phenomenal performance by No Mercy right there. जी हाँ, वहाँ पे एक अच्छा जो कर्व बॉल का इस्तेमाल किया जा चुका था, जिसकी वजह से साइफर को आप देख सकते हैं पीछे जाना पड़ता और कहीं ना कहीं उन्होंने राइट साइड पहले क्लियर किया और फिर जैसे ही पीक आता और यहाँ पे माइंड रिक डाउन करेंगे एस को, और आरके भी यहाँ पे माइंड रिक को डाउन कर चुके। तो फिलहाल यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों ही टीम से एक एक यहाँ पे फ्रैग निकाला जा चुका है। गॉर्विस कम्स विद द स्टोन ब्लेड यहाँ पे, बट आरके भी विल शट हिम डाउन। यहाँ पे ट्रेड ऑफ जरूर किया जाएगा, बट कहीं ना कहीं यहाँ पे वेपन्स का डिफरेंस जरूर है। शेरिफ वर्सेस वैंडल एंड फैंटम की फाइट होगी, यहाँ पे इतना आसान नहीं होने वाला है। पुशी को यहाँ पे अंदाजा हो चुका। प्लेयर सामने क्रॉसर प्लेसमेंट देखिए कितना लाजवाब है, सीधे हेड की तरफ, बट यहाँ पे जिगल पीक के साथ आरकेबी यहाँ पे पुशी को जरूर डाउन करेंगे। नो मर्सी विल कम, ही विल शट डाउन टू साइड। यहाँ पे 1 वर्सेस 1 की सिचुएशन है। आरकेबी को मेरे हिसाब से यहाँ पे वेपन जरूर मिल चुका है, नो मर्सी को यहाँ पे आइडिया जरूर है और यहाँ पे हॉट हैंड का इस्तेमाल कर दिया जा चुका है। स्पाइक इनिशिएट किया जाएगा, साथ साथ यहाँ पे लॉकडाउन भी आता है और यहाँ पे आरकेबी फिलहाल अभी देख सकते हैं अंदाजा उनको हो चुका है कि सिटी की साइड से एंट्री होगी, बट नो मर्सी का जो एम है वो थ्रू द हेड और यहाँ पे एक और राउंड क्लच करके अपनी टीम के लिए बहुत बेहतरीन तरीके से, मतलब एज ए सेंटिनल जिस तरीके का परफॉर्मेंस दिखा रहे थे, आई एम प्रीटी मच श्योर कि ऐसे प्लेयर्स को टीम में रख के आईपीएल बहुत खुश होंगे। I mean, I truly think that last round could have been better if even just after the plant, Phoenix could have ultied right then and there. Because Killjoy की ulti भी उसी time, exactly उसी time आई थी and she wouldn't have crossed the limit so far. But I thought that, I think my personal feeling would that be I would have ultied with Phoenix, but RKB still decided not to go for that ult. I think we will probably see an ult by RKB this round. And let's see if that can make any difference in this round. What do you think, Modex? मुझे लगता है वहाँ पे एजे की वहाँ पे एग्रेसिव पीक लेने की जगह थोड़ा सा टाइम बाय करते, क्योंकि वहाँ पे लॉकडाउन का इस्तेमाल जरूर किया गया था। बट चलिए अभी बात करते हैं फिलहाल इस राउंड की। यहाँ पे स्टाउडेड स्टफ का भी इस्तेमाल किया जा चुका है। यहाँ पे जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ फिनिक्स ऑल्ट लेके यहाँ पे जरूर आए थे, रनिंग बैक का इस्तेमाल, बट फिलहाल यहाँ पे फ्रैग आप देख सकते हैं गॉर्बिस को डाउन कर दिया जा चुका है, बट यहाँ पे ब्लाइंड भी किया जा चुका है। माइंड रेक्स यहाँ पे शानदार तरीके से कर्व बॉल का इस्तेमाल कर रहे हैं, अटैक को यहाँ पे स्लो करने में सफल जरूर है। स्पॉट यहाँ पे जरूर किया जाएगा, सुसाइड यहाँ पे बिटवीन के लिए 2 फ्रैग निकालेंगे। यहाँ पे डिफेंडर टीम की तरफ से मर्सी अकेले बचे हुए, कैन ही टेक डाउन 1%, 2%, बट
आरकेबी विल शट हिम डाउन। और यहाँ पे जो मैन पावर का एडवांटेज था वो इस बार अटैकर्स टीम के पास था। कहीं ना कहीं 1 वर्सेस 5 सिचुएशन इतना आसान नहीं होता वहाँ पे क्लच करना, बट समहाउ मर्सी यहाँ पे जाने से पहले 2 प्लेयर्स को जरूर डाउन करेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे मर्सी आज बहुत ज्यादा फॉर्म में नजर आ रहे हैं और अपनी टीम से टॉप फ्रैग। हालांकि यहाँ पे हमारी अटैकिंग टीम यहाँ पे अपने लिए एक राउंड जरूर निकालती हुई, पर यहाँ पे मर्सी का गेम प्ले जिस तरीके का गेम प्ले दिखा रहे हैं यूजिंग किलजे, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है अगर उन्होंने कोई डुएलिस्ट एजेंट चुना होता तो काफी मुश्किल में डाल रहे होते हमारी डिफेंड अटैकिंग टीम को। बिल्कुल, I think Mercy playing a duelist would be an amazing thing to watch. But right now we have 5 people XG just pushing on to the A side. And will they be able to spot that Phoenix shotgun? Yes, they will be able to, but he will do a lot of damage for No Mercy to finish off with that kill. And No Mercy will take off another kill with a Spectre. I know A exactly. 3v3 situation, but Mercy has a gun right now and he is onto that 4th kill. Spike And down Ryu A. taking an amazing shot with that Mercy right onto that headshot, and will he be able to? He will know that enemy. Mercy will take down another one. This game is just going crazy right now. इसके यहाँ पे जिम्मेदारी आ चुकी है, 1 वर्सेस 2 की सिचुएशन है, लो कर दिया जाएगा और गॉर्बिस यहाँ पे लास्ट फ्रैग निकालेंगे अपनी टीम के। और यहाँ पे 8-3 का स्कोर हो चुका है, 11 राउंड हो चुके हैं। लास्ट राउंड हमारे फर्स्ट हाफ का, और कुछ भी करके मुझे लगता है यहाँ पे राउंड जरूर निकालना पड़ेगा हमारी अटैकिंग टीम को, अदरवाइज उनके लिए मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ सकती है। क्योंकि हेवन आपको पता है कि एक अटैकर्स का मैप, और कहीं ना कहीं यहाँ पे जब डिफेंडर्स इस तरीके का डोमिनेशन शो करते हैं तो सेकंड हाफ उनके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। और कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आपका जिस लेवल का यहाँ पे हाई रहने वाला है, हमारी टीम अटैकर को कुछ ना कुछ करके दिखाना पड़ेगा, यहाँ पे क्लच जरूर करना पड़ेगा ये राउंड एट एनी कॉस्ट, दे हैव टू विन। Bilkul, I mean, I'm truly enlightened to see what Mercy is gonna do in attacking side. And here comes the Sova ulti, and he will take down one, but Phoenix will push off, but he will be guarded by that Cypher, and Cypher will take down Phoenix. Now it's a 3v2 situation on to a 1v3 situation. Cypher being low, and these guys are going to A. Omen will be lurking off. Sova with no idea where Omen is, and he will have to. Alright, he will ulti, but will he cancel it? बट यहाँ पे उनको स्पॉट नहीं किया जा चुका। कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं सिटी की साइड एंट्री यहाँ पे धीरे धीरे करते हुए कुछ उनको अंदाजा हो चुका है ए साइड की तरफ यहाँ पे टेक करते हुए हमारे, बट यहाँ पे आ चुके हैं तीनों के तीनों प्लेयर्स साइड अपने, आप देख सकते हैं एक एक एंगल होल्ड करते होते। यहाँ पे उसी के लिए क्लच करना इतना आसान नहीं होने वाला है। लोकेशन यहाँ पे रिवील हो चुकी है, एंजल यहाँ पे जाते हुए यहाँ पे डार्ट को जरूर रिमूव किया जाएगा, बट कहीं ना कहीं तीनों प्लेयर यहाँ पे, बट बहुत शानदार क्रॉस प्लेसमेंट यहाँ पे पुशी का एस को यहाँ पे डाउन कर दिया चुका, बट उनकी हेल्थ भी बहुत कम हो चुकी है और यहाँ पे सुसाइड उनको शट डाउन करेंगे। एक अच्छा राउंड निकाला यहाँ पे अटैकिंग टीम ने, कहीं ना कहीं इस राउंड की बहुत ज्यादा जरूरत थी। दिस राउंड वाज इंडीड रिक्वायर्ड इन देयर फेवर, somehow they managed to win this round. Let's see can they come back in the second half। यहाँ पे जो सेकंड हाफ है हमारा साइड स्विच आप सबका हो चुका है, जनता को मैं बताना चाहूंगा। यहाँ पे अभी हमारी जो टीम एक्सजी है वो आपको डिफेंड करते हुए नजर आएगी, जिन्होंने अटैकिंग में अभी तक 4 राउंड निकालने हैं अपने लिए। लेट्स सी यहाँ पे टीम एक्स ग्रेविटी क्या एक कमबैक कर पाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो 4 राउंड का फासला है, अगर आप यहाँ पे 2 पिस्टल पहला पिस्टल राउंड निकालते हैं, दूसरा इकोनॉमी राउंड अपने ओपोनेंट को मजबूर करते हैं करने के लिए निकालते हैं, तो कहीं ना कहीं फासले आप जरूर कम कर सकते हैं एजे। और मेरे हिसाब से यहाँ पे 4 राउंड आपको बैक टू बैक निकालना पड़ेगा अगर आपको एक अच्छा कमबैक दिखाना है। Because I mean, the first 2 rounds are definitely necessary right now for Team XG to show that dominance and to show that potential, that they have the potential and the confidence to come back. But agar first 2 rounds, I mean, Mindrex will take down Suicide with a double headshot, and Gorbis will take down another one going on for the plant. We have 2 guys at A-Link and 1 guy at C-Link. Let's see how they're gonna push back into the side, how they're gonna retake the side. All the players are right now holding for the end. होने वाला है। यहाँ पे एस गॉर्बिस को जरूर डाउन कर चुके हैं, 3 वर्सेस 3 सिचुएशन यहाँ पे इक्वलाइज कर दिया चुका है। एस यहाँ पे डाउन करेंगे, टर्मिनेटर भी यहाँ पे डाउन कर चुके हैं। एस यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत शानदार एम, और कहीं ना कहीं यहाँ पे अकेले बचे हुए सोवा इतना आसान नहीं होगा। यहाँ पे खुशी अकेले कोशिश जरूर कर रहे हैं, बट यहाँ पे आरके भी मेरे हिसाब से जब तक वो फाइट लेंगे तब तक यहाँ पे स्पाइक हो चुका होगा, डिफ्यूज और टर्मिनेटर उनको भी डाउन करते हुए नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं यहाँ पे हेवन, जो हमें पता है कि अटैकर्स के लिए थोड़ा सा आसान होता है, बट यहाँ पे कुछ अलग ही मेटा दिखाई पड़ रहा है। डिफेंडर्स मुझे फर्स्ट हाफ में भारी पड़ते हुए नजर आए थे, और कहीं ना कहीं पहला जो राउंड निकाला हमारी डिफेंडिंग टीम में, जिस तरीके का आप देख सकते थे 3 वर्सेस
5 का सिनेरियो था उसको पहले इक्वलाइज किया गया और उसके बाद यहाँ पे ओवरकम करके यहाँ पे आप देख सकते हैं कमबैक आता हुआ हमारी डिफेंडर टीम के द्वारा। तो एजे कहीं न कहीं यहाँ पे बहुत अच्छी टक्कर, बहुत शानदार गेम प्ले दोनों ही टीम का। Bilkul. I mean, the last round there was a mistake right there with the Omen. I think he didn't notice that he was not having rounds in his pistol, and after two shots right in front of his enemy, he had a reload. So he had the with the reload there comes the price, and there we will see a full push with a full buy from Team XG right now, which they desperately need, and आप देख सकते हैं दोनों ही टीम की तरफ से यहाँ पे फ्रैग निकाले जा रहे हैं बट यहाँ पे मैन पावर का एडवांटेज जरूर क्रिएट हो चुका है। एमसी यहाँ पे आप देख सकते हैं एरिस का इस्तेमाल करते हैं कहीं ना कहीं उनको अंदाजा हो चुका है कि हेवन प्लेयर और यहाँ पे एज को सीधे हेडशॉट दिया जाएगा। सुसाइड यहाँ पे पिच को टेक डाउन करेंगे, दोनों प्लेयर्स यहाँ पे डाउन थे एंड माइंड रेक्स वोन मेजेड यहाँ पे मिस बिल्कुल नहीं किया जाएगा और कहीं ना कहीं जो कर्व वॉल का शानदार इस्तेमाल, 2 फ्रैग हम अपनी टीम के निकालेंगे। फिलहाल जिस चीज की बात हम कर रहे थे ये यहाँ पे वो यहाँ पे नहीं हुआ है। आप यहाँ पे हम अंदाजा लग रहा था कि कहीं ना कहीं यहाँ पे 8-6 देखने को मिलेगा बट हेयर कम्स द 9-5 यहाँ पे जो फोर्स बाय करके कॉन्फिडेंस दिखाया हमारी अटैकिंग टीम ने कहीं ना कहीं पूरी तरह से कसौटियों पे खड़े उतरते हुए और अपने टीम के लिए एक राउंड यहाँ पे निकाला है। तो कहीं ना कहीं सेकंड हाफ में आप देख सकते हैं दोनों ही टीम ने एक राउंड निकाल चुके हैं, 9-5 का स्कोर हो चुका है और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक इकॉनमी राउंड होगा डिफेंडिंग टीम के लिए। तो फिलहाल अभी भी एडवांटेज यहाँ पे हो सकता है हमारी अटैकिंग टीम के फेवर में। Bilkul, I mean that force by the decision of the force by and the confidence with which they pushed. I mean, it was an amazing round, and they have definitely hurt the damage the enemy's XG's economy right now, and they will be forced to go for an eco round, and Eyes we will down. see another, most likely another win, a double headshot coming in from Gorbiz. और जिस तरीके का गेम प्ले एजे हमारे मतलब जो डुएलिस्ट दिखा रहे हैं, चाहे आप माइंडेक्स की बात करें या गॉर्बियस की बात करें, यहाँ पे फ्लफी आएंगे पीछे का अंदाजा नहीं था, वेपन अपग्रेड का भी यहाँ पे एक मौका मिल चुका है बट नो मर्सी अभी भी गराज के बाहर मौजूद है। बट वहाँ पे दोनों तरफ से वो देख सकते थे एक सैंडविच सिचुएशन का शिकार हुआ और यहाँ पे अटैकर के लिए एक बहुत शानदार बहुत तेजी से एग्जीक्यूट करेंगे उसी यहाँ पे बैक टू बैक 2 फ्रैग निकालते अपनी टीम के लिए। हालांकि कोशिश अच्छी की थी बट वहाँ पे जो सैंडविच सिचुएशन थी किसी भी तरीके से वहाँ पे कुछ करने नहीं दिया गया हमारी डिफेंडर्स को। अब फिलहाल यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइट शील्ड के साथ यहाँ पे वेपन बाय करते हुए नजर आ रही है हमारी टीम एक्सटी। लेट्स सी यहाँ पे क्या एक राउंड यहाँ पे निकाल पाएंगे हमारे डिफेंडर्स, क्योंकि यहाँ पे रोकना पड़ेगा आपको। और यहाँ पे पॉज के लिए मेरे हिसाब से रिक्वेस्ट की जा रही है। 5 और 10 का स्कोर हो चुका है ये यहाँ पे और मेरे हिसाब से अगर यहाँ पे बैक टू बैक 2 या 3 राउंड नहीं निकाले डिफेंडर्स के लिए, ये राउंड भी अगर हमारी अटैकिंग टीम के खाते में गया तो देन इट गोना बी टू लेट फॉर डिफेंडिंग टीम टू कम बैक। Bilkul. I mean, if you can just see the eco right now for WS, it's very मतलब बहुत ज़्यादा difference है. I think it's almost 20k difference right now in the ecos of both teams, and even if WS by chance loses this round, I don't want to jinx or anything, but they still have a buy for another 1 round and a full buy, and 2 of these players are still confident enough not to go for that upgradation of their guns. 2 players अभी भी Spectre और Ares पे खेल रहे हैं, and I think Enryu is on another level of confidence right now. He is not even buy that full shield. He's gonna go for that half shield. जी हाँ, उनको पता है कि उनकी जो डुएलिस्ट है उनके पास यहाँ पे नो मर्सी जो कि एज अ सेंटिनल जिनका एम बहुत शानदार, उनको वहाँ पे पता है कि मुझे एज अगर मैं पीछे रह के एक फ्रैग भी निकालता हूँ या डैमेज देके मरता हूँ तो मेरी टीम वहाँ पे कैपेबल है उसको कवर अप करने के लिए। कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं यहाँ पे जो एरिस की 50 बुलेट्स है उसका इस्तेमाल यहाँ पे जरूर किया जा रहा है। बी साइड की तरफ यहाँ पे एक बहुत फास्ट एग्जीक्यूशन आता है, माइंड आप देख सकते हैं यहाँ पे एलिंग होल्ड करते हुए नजर आ रहे हैं, साथ में टर्मिनेट भी होल्ड करते हुए नजर आएंगे। गॉर्बिस आप फिर से देख सकते हैं जिस तरीके की शुरुआत दिला रहे हैं यहाँ पे जेट और फिनिक्स अपनी टीम के लिए। गॉर्बिस और माइंड का लाजवाब प्रदर्शन, पुशिंग यहाँ पे एस को जरूर डाउन करेंगे और कहीं ना कहीं यहाँ पे टीम ग्रेविटी के लिए मुश्किलें बढ़ती है। यहाँ पे पुश के भी होल्ड करते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं जो एज का इस्तेमाल था आप देख सकते हैं यहाँ पे तो एरिस का इस्तेमाल देख सकते हैं आप यहाँ पे एंड्रयू को पता है वहां से प्लेयर आने वाले, पहले से वहां पे प्री फायर दिया जा रहा है, प्लेयर्स के लिए कोई भी मौका नहीं दिया जा रहा है ये वहां पे एंट्री लेने का और कहीं ना कहीं पिक ऑफ भी करते हो प्लेयर्स को। बिल्कुल, I mean, आप कम्युनिकेशन और वो कोऑर्डिनेशन देख सकते हैं WS के अंदर. लाइक these guys are just playing back to back and side to side like real men. मतलब I'm not judging anyone, but WS is showing another class right now. The way they are defending and post planting the pushes, I mean, it's truly going in like a Get out of my way. proper team to me. I mean,
these guys are really professional right now, and these guys are doing it amazingly on the main stage right now. यहाँ जिस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं एंट्री दिला रहे हैं साइड के अंदर, कभी माइंड काम करते हैं वहाँ पे, कभी यहाँ पे गॉर्बिस काम करते हैं। फिलहाल सुसाइड इस बार आप देख सकते हैं माइंड एक्स को यहाँ पे जरूर डाउन कर दिया जा चुका है, बट गॉर्बिस यहाँ पे अपनी स्टोन ब्लेड के साथ जरूर लाइव है, और जब तक वो यहाँ पे खड़े हैं मर्सी है उनके साथ में, इतना आसान नहीं होगा ये राउंड निकालना। फिलहाल यहाँ पे 4-5 का स्कोर हो चुका है। यहाँ पे साइड जरूर होल्ड किया जा रहा है। लेट्स सी, यहाँ पे सुसाइड आप देख सकते हैं गॉर्बिस को भी डाउन कर चुके हैं। यहाँ पे 3 वर्सेस 5 की सिचुएशन हो चुकी है। यहाँ पे क्राउडेड स्टेप का इस्तेमाल किया जाएगा, बट आरके भी विल शट हिम डाउन, और यहाँ पे अकेले बचे हुए नो मर्सी, और अकेले यहाँ पे 5 लोगों से पंगा लेना इट्स रियली नॉट इजी। कहीं ना कहीं इस राउंड की जरूरत भी थी। यहाँ पे 11 पे अगर आपने नहीं रोका देन आप यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे टीम एक्स को कुछ भी करके यहाँ पे गुच्छों में राउंड निकालने पड़ेंगे, बंच ऑफ राउंड जीतने पड़ेंगे। अगर आप यहाँ पे 11 पे पॉज कर सकते हैं अटैकर्स को, देन देयर इज अ सिचुएशन, देयर इज अ चांस यू कैन कम बैक, अदरवाइज इट गोना बी टू लेट। एंड दिस मैच एंड दिस मैप बोथ विल बी गोइंग इन फेवर ऑफ टीम अटैकर्स। बिल्कुल जैसा कि आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से ये दोनों टीम्स एक दूसरे को कंपटीशन दे रही है, आई मीन देयर इज नो सच अ डिफरेंस बिटवीन बोथ द टीम्स इन minds of game sense and in minds of aim and everything, not even the skills. I think the only difference which I am seeing right now in both the teams is the communication part. I mean, without even communication, these guys are playing together. Placing swamp. The WS right now, apart from the last round, I have seen so much coordination in both the teams right now. या बट फिलहाल मैं देख पा रहा हूँ इस राउंड में कांटे की चक्कर चले। सुसाइड पिछले राउंड में भी आप देख सकते हैं अपनी टीम के लिए फ्लैग निकाल रहे हैं, बट बहुत शानदार हेडशॉट यहाँ पे माइंड एक्स का फ्लफी को डाउन कर चुका है। कहीं ना कहीं यहाँ पे साउंड जरूर आ चुका है। 2 प्लेयर्स को टेक डाउन करेंगे, 3 फ्लैग निकाल चुके हैं माइंड एक्स अपनी टीम के लिए। यहाँ पे बहुत शानदार मोमेंट उसको अंदाजा हो चुका है। आरके भी यहाँ पे माइंड एक्स को जरूर डाउन करेंगे, टर्मिनेटर की होल्डिंग के साथ इनको डाउन करेंगे, टर्मिनेटर आगे पुश करेंगे, गॉर्बिस को डाउन कर दिया चुका है। 1 वर्सेस 1 सिचुएशन, यहाँ पे टाइम जाता हुआ आरके को अंदाजा जरूर था, बट पुशी विल शट हिम डाउन, और एक और राउंड यहाँ पे जाता हुआ अटैकर से खाते में, और कहीं ना कहीं यहाँ पे मैच पॉइंट आता हुआ। ओडिन का इस्तेमाल जरूर अच्छा किया था, बट वहां पे विफल कर दिया जा चुका था। लास्ट मोमेंट पे खड़े थे अपनी टीम के लिए। बहुत शानदार राउंड, बट इस बार कांटे की टक्कर थी। बहुत बेहतरीन गेम प्ले दोनों ही टीम की तरफ से, बट जो बढ़त हो चुकी है यहाँ पे 6 राउंड की, कहीं ना कहीं राउंड आप देख सकते हैं यहाँ पे फासले काफी बढ़ चुके हैं। बिल्कुल, आई मीन अभी राइट नाउ इट्स नॉट अबाउट द स्किल और एनीथिंग, आई थिंक इट्स जस्ट अबाउट द मेंटल प्रेशर राइट नाउ, बिकॉज any one mistake could take the game away from XG right now, and that thing brings up a lot of pressure, and a lot of pressure means they're gonna make some serious mistakes. So let's see how these guys actually handle the pressure, and will they be able to go for a comeback. क्या लगता है आपको प्रोडक्ट्स? जी हाँ, मुझे लगता है यहाँ पे बहुत फास्ट एग्जीक्यूशन हो चुका है ये साइड की तरफ। एस यहाँ पे एंड्रयू को जरूर डाउन कर चुके हैं। मैन एडवांटेज यहाँ पे जरूर होता है। यहाँ पे हंटर फ्यूरी का इस्तेमाल किया जाएगा। कोशिश जरूर यहाँ पे की जा रही है कि प्लेयर्स को स्लो डाउन किया जाए यहाँ पे, और यहाँ पे माइंड एक्स आप देख सकते हैं फ्लफी यहाँ पे पुश जरूर किया था स्टोन बिट का इस्तेमाल करके, बट यहाँ पे अंडर द हेवन मौजूद थे, वहाँ पे टेक डाउन कर दिया जा चुका है। नैनो स्वाम को यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे दूसरा हंटर फ्यूरी का इस्तेमाल किया जाएगा। गॉर्बिस यहाँ पे एस को जरूर डाउन करेंगे। फिलहाल टैग यहाँ पे जरूर करेंगे पुशी। आरके भी जो कि बहुत शानदार खेले थे उनको डाउन कर दिया चुका है। टर्मिनेटर विल शट डाउन माइंड से यहाँ पे। ओ माय गॉड, गॉर्बिस का एम देखिए आप, सीधे हेड पे टर्मिनेटर के यहाँ पे स्पॉट कर चुके हैं। अंदाजा जरूर हो चुका है 1 वर्सेस 3 सिचुएशन, और यहाँ पे सुसाइड के लिए इतना आसान नहीं हो पाएगा, और मुझे लगता है ये गेम जरूर जाने वाला है। Enemy remaining. ओ माय गॉड, एक स्प्रे में 2 बंदे को डाउन जरूर किया, बट यहाँ पे समय नहीं पर्याप्त बचा। नो मर्सी विल गेट द लास्ट फ्रैग फॉर हिज टीम, एंड हियर दिस मैच गोज इन फेवर ऑफ टीम अटैकर्स। और यहाँ पे बहुत शानदार गेम प्ले हमारी टीम वुल्फपैक का, जिस तरीके से उन्होंने गेम प्ले दिखाया है, जिस तरीके का दबाव क्रिएट किया है अपने ओपोनेंट्स के ऊपर, यहाँ पे टीम एक्स ग्रेविटी को किसी तरीके का मौका नहीं दिया एजे। और यहाँ पे एक बार स्कोर पे नजर डालेंगे। गॉर्बिस यहाँ पे देख सकते हैं बीइंग ए डुएलिस्ट अपनी टीम के लिए शानदार प्रदर्शन, 30 फ्रैग्स निकाले हैं अपनी टीम के लिए, 16 डेथ्स एंड 3 असिस्ट। यहाँ पे टर्मिनेटर एज अ इनिशिएटर डिफेंडिंग टीम से, सॉरी अभी देख सकते हैं दूसरी टीम से यहाँ पे 18 किल निकाले, 18 किल्स विद 14 डेथ एंड विद 4 असिस्ट। नो मर्सी बहुत शानदार खेला यहाँ पे फर्स्ट हाफ में, जिस तरीके का गेम प्ले दिखाया था, जिस तरीके का डिफेंस अपनी टीम को सपोर्ट किया था। 19 किल्स बीइंग अ सेंटिनल, वेरी वेल प्लेड, वेरी नाइस परफॉर्मेंस यहाँ पे, और सिर्फ 9 डेथ है यहाँ पे आप देख सकते हैं। आरकेबी ने 18 किल्स निकाले हैं बीइंग ए डुएलिस्ट, उन्होंने भी अपना काम काफी बखूबी निभाया है। माइंड डेक्स आप देख सकते हैं शानदार 13 किल के साथ यहाँ पे
अच्छी की बात करें यहाँ पे एज अ सोवा उन्होंने 14 किल्स निकाले और कहीं ना कहीं यहाँ पे ए स्क्वाड थोड़ा सा कम मौका मिला, बिलो 10 रहे हैं। और अगर बात करूंगा फ्लफी एज अ जेट, मुझे लग रहा है थोड़ा सा जेट का डिफरेंस वहाँ पे एजे जरूर नजर आया है हमें। आई मीन फ्लफी की जैसे मैं परफॉर्मेंस के लिए बोलूंगा, फ्लफी इज नॉट, आई हैव सीन सम ऑफ हिज गेम्स एंड आई डोंट थिंक ही इज अ बैड प्लेयर, इट्स जस्ट द वे ही वाज पुशिंग वाज आउट ऑफ द टीम. He was going in way too fast and being a jet player, आपको अपनी टीम के हिसाब से चलना ही होता है हमेशा. You can't make such plays in games like these where you have to play against professional players. WS जी में हाँ, सारे players, they have played so many professional games and they are on such कहीं high न कहीं एजे levels मैं right कहना now. चाहूँगा कि यार Exactly. हर दिन आपका हाथ भी नहीं चलता, कभी न कभी उतार-चढ़ाव गेम है, होता ही रहता है। बट कोई बात नहीं, अभी आप सबको पता है जो हमारा एलिमिनेशन है दैट इज़ डबल एलिमिनेशन। तो यहाँ पे जो टीम हारती है, ऐसा नहीं कि वो यहाँ से बाहर हो चुकी है, उनके पास एक मौका और है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और यहाँ पे देवियो सर जिन्हों बने रहिए हमारे साथ, एक हमारा आज का लास्ट गेम आपके लिए बहुत जल्दी हम लेके आएँगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। टिल देन गाइस स्टे ट्यून्ड विद अस।